All right, recording start हो गया है. All right, hi everyone. This is Srijan India One, Effective Communication and Personality Development Classes. इसमें हम primarily बात कर रहे हैं effective communication की. Let us start. So hi everyone. Effective communication is very important. Effective communication is not only about the language, but it also contains the context, the choice of word, the message, the content, etc. So आज की क्लास में we are primarily doing this exercise keeping in mind civil services exam preparation. Civil services exam preparation. तो इसमें prelims और mains batch दोनों है. वो इसलिए है क्योंकि mains batch को एक ऐसे लिखना है. इस ऐसे को हम तैयार करेंगे और प्रीलिम्स बैच में हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड राइटिंग दोनों है. सो दैट इज व्हाई दिस इज अ कंबाइंड क्लास. और लेट अस बिगिन. अब इस क्लास में हमें क्या करना है, ऑल द पार्टिसिपेंट्स दे हैव गॉट 3 मिनट ऑफ मैक्सिमम 3 मिनट ऑफ टाइम, बिकॉज सारे स्टूडेंट्स का नंबर आना चाहिए ना. तो 3 मिनट का इफेक्टिव टाइम है आपके पास मैक्सिमम. इस 3 मिनट पे आपको इन 4 सब्जेक्ट्स में से, 4 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे बहुत अच्छा सा एक स्पीच देना है. पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी होती है. पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलना हमें आना चाहिए. पब्लिक स्पीकिंग. सो पर्पस ये है हमारा कि हम इन 4 टॉपिक्स में 3 मिनट का एक बहुत अच्छा स्पीच दें. सेकंड, 4 डिफरेंट टॉपिक्स इसलिए हैं ताकि रेपिटेशन नहीं होगा, वैरायटी होगी. हमें नए नए आइडियाज पता लगेंगे, यूनिक चीजें पता चलेगी. इसको आप साइमल्टेनियसली नोट डाउन भी करते जाओ अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप अपना एक अच्छा सा स्पीच दो. और इसके बाद आपको 2-3 दिन का टाइम होगा और उसमें आपको इसमें 1000 वर्ड्स का एक बहुत अच्छा ऐसे भी लिख के बताना है. तो इससे 2 पर्पस हमारे सॉल्व हो रहे हैं. एक तो हमारा स्पीच भी तैयार हो रहा है और दूसरा हमारा राइटिंग भी तैयार हो रहा है. और एक जो पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप पीयर लर्निंग एटसेट्रा है वो भी ओवरकम यहाँ पे हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस क्लास. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. You just have to raise your hand और आप 2 to 3 मिनट्स में एक बहुत अच्छा सा इफेक्टिव आप यहाँ पर कंसाइज वे में बताने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें कंसाइज भी होना चाहिए. कंसाइज भी होना चाहिए. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में प्रिसीजन जरूरी है. अभी 7 C's देखे थे ना, क्लैरिटी, कोहेजन, है ना. तो ये सारी चीजें हमें स्पीच में दिखाना है. ऑलराइट, सो लेट अस बिगिन. लेट अस डू इट वन बाय वन. मैं आपको अभी ऑर्डर में अभी कॉल कर रहा हूँ. लेट अस बिगिन. और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रहा है. इन फ्यूचर आई विल शेयर इट ऑन यूट्यूब एज वेल. ओके, यस, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड नाउ. इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड नाउ. ओके, तो खूब अच्छे से बोलना, प्रेशर नहीं लेना है, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं आना चाहिए. अच्छे से आराम से रिलैक्स होके अपनी बातों को रखो. ओके, यस 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 यस. ऑल राइट, शिवाक्षी. शिवाक्षी से स्टार्ट कर ले. if you are all are okay with it. Okay, all right, all right. All right, Shivakshi, quick. आपका 11:30 अपॉइंटमेंट है. You have got 8 minutes of time. Quick. But usually this is the only time we are doing it. Next time से हम जो पैटर्न है उसी को फॉलो करेंगे. Okay. Yes. All right. Let us start. Let us start. So स्टार्ट करते हैं. ये 4 टॉपिक्स हैं. आपको पहले अपना एक टॉपिक का नेम बताना है और उसके बाद आप अब उस टॉपिक पे 3 मिनट का एक बहुत अच्छा सा स्पीच देंगे. ओके, यस, लेट अस स्टार्ट. शिवाक्षी, बिगिन. क्विकली बिगिन. अच्छा, माइक्स ऑन नहीं किए मैंने. वेट अ मिनट. टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन. वीडियो की जरूरत है किसी को, क्योंकि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज भी होता है. अगर किसी को वीडियो ऑन करना है तो मैं वीडियो ऑन भी कर सकता हूँ. वीडियो की जरूरत है? नो, वीडियो इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली ऑडियो. ओके, सो लेट अस बिगिन. ऑल राइट. Shall I start, sir? यस नेहा, आप स्टार्ट कर. आप बोल सकते हो. इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, 3 मिनट का बोलने की कोशिश करो. एवरी वन ऑफ यू, अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो ना तो भी आप कोशिश करो बोलने की. कोई बिग डील नहीं है. वो फर्स्ट टाइम का हेजिटेशन है ना, वो दूर हो जाएगा. पैटर्न ये है कि ये 4 टॉपिक्स है. सेक्शन ए ऐसे के, इनमें से किसी भी एक टॉपिक पे आपको 3 मिनट, 2 या 3 मिनट या जितना बोलना है आप बोलो. स्टार्ट करो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एटलीस्ट स्टार्ट करो. Okay. Yes, Shivakshi, continue. Swami Vivekanand ji once Introduce said. the topic. Start with the topic. Yeah. Okay. Yeah. My topic is a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. Yes. Swami Vivekanand ji once said, ignorance is the mother of all the evil and all the misery we see. Let men have the light, let them be pure,
and spiritually strong and educated. Then alone will misery cease in the world, not before. We may convert every house in the country into the charity asylum. We may fill the land with hospitals, but the misery of man will still continues to exist until man's character changes. A very good morning to all. I, Shivakshi Dikshit, welcoming you all for this wonderful class of communication skills. From the above lines, you must have an idea what my topic is. A ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. Today, I'm going to tell you a story of a girl who was a bit introvert, career oriented, cute, chubby, and full of life. She was an average student. Her 12th was from PCM. She cracked IIT JEE, but she didn't take admission because at that time she was just new. She doesn't want to be an engineer. So she took up management as one of her subjects in graduation, and after hard work of 3 years, she got placed in a reputed firm. There, she also worked hard and very well. But one day, one of her seniors asked to her, "What do you want to become?" And she just randomly replied, "I, I want to become, I want to work for people. Maybe a social worker." Time passes, and after a few months, she analyzed this incident and she took a decision to leaving her job and working for people. And now in a planned role, because now she's preparing for UPSC. I won't reveal her name as she is not the well known yet. But what I want to tell you here and highlight here is life brings changes. Change is hard. We often settle for what is within reach. Often we pick easy goals and hard on ourselves feelings. We can't go for bigger goals. Deep inside, we know that there is a lot more we can do. We may just need help in some ways. What is interesting here is once you decide the way you appear, you start to meet people and things happen. So make the decision and go for it because you, you only know what exactly you can do and what you meant for. In the last, I just want to end up my saying by if you are going through hell, keep going, my friend, keep going. Thank you, sir, for giving me the opportunity and have a great day ahead. यस देखो कितना अच्छे से थोड़े से शब्दों में और बहुत बहुत सिंपल रखते हुए चीजों को बोला, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया। और ये जो टॉपिक था, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। सो द पर्पस वाज कि हम आइडेंटिफाई करें, हम खुद को चैलेंज भी करें, खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकले, कैलकुलेटेड रिस्क लें और हम एक्सप्लोर करें, ग्रोथ करें, इवॉल्व हो। नो, सो ये एक बहुत अच्छा आपने बोला। वेरी गुड शिवाक्षी, कॉन्फिडेंस था आपकी आवाज में और क्लैरिटी भी बहुत अच्छा था। दिस इज रियली नाइस, रियली नाइस। ओके, Thank you, sir. Thank you. यस यस। रफी देखो प्रिपेयर्ड नहीं है, बट वही तो बात हो गई ना, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर। खुद को चैलेंज करो। इट्स ऑल राइट इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, इवन देन यू कैन स्पीक फॉर सम टाइम, 1 or 2 or 3 minutes you can speak, so you should speak. Okay, yes, all right। देखो अब नेक्स्ट टाइम से क्लासेस अपना 11 से स्टार्ट है और इसी सीक्वेंस में हम इसको फॉलो करेंगे, इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। देखो संडे इसलिए चूज किया है बिकॉज काफी लोग वर्किंग प्रोफेशनल है, उनका संडे को वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें इन कंपैरिजन टू वीक डेज। सो दैट इज वाई नेक्स्ट टाइम से हम स्ट्रिक्टली इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। पैटर्न इन द सेंस लाइव क्लास रहेगा और जो रेज्ड हैंड है इसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। ऑलराइट, यस, ऑलराइट। हाय आरती, हाय आरती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। इतना डल क्यों साउंड कर रहे हो? फिर से बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सो मे आई स्टार्ट? यस प्लीज स्टार्ट। पहले अपना टॉपिक का नाम बता दीजिए बिकॉज आज 4 ऑप्शंस है हमारे पास। सो टॉपिक का नाम और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करिए। सर और एवरीवन ऑफ यू, यहाँ जितने भी आपको आप सुन रहे हो ना, उससे आप नोट्स लो, क्लूज लो। आपको हर स्टूडेंट में कुछ बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे और यूनिकनेस मिलेगा। तो ग्लास इज फुल एटीट्यूड नहीं रखना है। इवन दो इफ यू आर वेरी गुड, आपको हर स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, यस यस आरती, स्टार्ट। Okay, sir. So my topic is poets are
unacknowledged legislatures of the world. Good. So I think these lines, in my opinion, these philosophical lines highlight the importance of those very talented and educated personalities whose work has inspired many, and uh, and they have played central role in guiding the humanity towards right path, and also help mankind to rise against the differences and weaknesses for a greater good. And we can take many examples from Indian national movement too, as we can see. uh, I think one of the most recognized example can be the our national song Vande Mataram, which has such a profound impact on masses during at that time also, even, and we can see its impact today too. uh, but if we talk about at that time, this song had ability to bring people together to stand for their motherland. And I think there is other example we can take as uh, by our uh, by our one of the freedom fighter, Bhagat Singh ji, who gave the slogan of Inqilab Zindabad, which is again a poetic phrase which made British to take actions against Indian national movement, but at the same time also inspired our youth at that time to stand for their country and and against the exploitation of Britishers. uh, I think one more example I would like to highlight here, which is our national anthem, which we have been during even during school times, which we sung daily in our prayer assemblies, that impacted students from the childhood itself. That psychological impact and the affection towards nation. This our national anthem by Rabindranath Tagore ji filled in people from the very start of from the very start of educational career in students, and also not just students. We can see its psychological and territorial uh, togetherness in this song that makes people to feel the spirit of nationhood and inherit it in mind to stand always by it. And at last, I would like to end my conversation with that poetry and songs have poetries and songs have such a great deep psychological impact on people, where people are able to connect themselves and their emotions to the grounded reality and stand together when it is required, as highlighted by Matthew Arnold, who highlighted that through which we can see that poets can see the crisis before humanity. Uh, his quote, "Science versus emotion." We can see that even in today's time, that people are more mechanically driven than emotionally. Emotions are quite often being neglected. So I think we. Sh- so I think uh, psychological through this philosophical lines, poets are unacknowledged legislators of the world. I would like to say that poetry and songs have great impact on mind of people, and we should recognize their contribution equally. Thank you, sir. वंडरफुल वंडरफुल। बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक चूज किया था आरती ने। ये आसान नहीं है, इस पे बोलना आसान नहीं है। इट्स अ रियली डिफिकल्ट टॉपिक, और इसको जिस तरीके से क्लब किया है ये बहुत अच्छे से किया है। आपको याद है जो लता मंगेशकर जी है, लता मंगेशकर जी, उनका एक सॉन्ग है, ए मेरे वतन के लोगों, ए मेरे वतन के लोगों। इस सॉन्ग को जब आप सुनते हो, इस पोयम सॉन्ग को जब सुनते हो, तो हमें बहुत ज्यादा पैट्रियोटिज्म नहीं आता है, पैट्रियोटिज्म नहीं आता है। ब्लड बॉइल्स जब हम देखते हैं कि हमारे कितनी कुर्बानी की थी हमारे सैनिकों ने, हमारे सोल्जर्स ने, एक्सेट्रा। नो, सो दिस इज द पावर ऑफ पोएट्री, दिस इज द पावर ऑफ सॉन्ग्स। सिमिलरली अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखो, वहां पे थिंकर्स ने कैसे चीजों को एडजस्ट किया।
थिंकर्स ने नए आइडियाज लेके आए। आप रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता को सुनो, रामधारी सिंह दिनकर, मुझे तोड़ लेना वनमाली देना तुम उस पद पर फेंक, नो। सो द पॉइंट इज कि ये जो पोएट्री होती है, ये लेजिस्लेटर्स होते हैं, ये लाइक कई बार अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स है, अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स। पोएट्स आर द अन, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल पुट टुगेदर, वेरी वेल पुट टुगेदर, वेरी गुड। तो देखो कितने सारे नए आइडियाज मिले। इसीलिए मैं बोलता हूँ सारे से पॉइंट्स लो, यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव फ्रॉम एवरीवन, एवरीवन। एग्जाम्पल्स लिखो, उसको कॉन्क्लूड करो, आवाज में भी वॉइस मॉड्यूलेशन लाओ, उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश करो, यू नो। यस, वेरी गुड आरती। हाय हाय रफी, हाय रफी, आर यू देयर? अरे स्पीक इट, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, जस्ट स्पीक इट, यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू कैन स्पीक वेरी Hello, वेल। हेलो, हाय रफी। am I audible? यस, यू आर ऑडिबल। Good morning, everyone. यस। Hello, among the four topics, I will talk about poets are the unacknowledged legislators of the world. Let me start with the quote: "Beneath the rule of man entirely great, the pen is mightier than the sword," by Edward George. Now, what does this quote mean? It means that you may win some land with force, with the help of a sword, but you cannot win hearts. The pen has the ability to sway opinions and leave inedible impressions that can help in winning the heart. History is filled with poets who transformed politics and philosophies around the globe and used their pen as a mighty weapon. For example, the originator of politics, Aristotle, was also a poet in ancient Greek who used poetry for establishing logical sequences. Now, about India, India too has a long history of poets since ancient days. They played a role in transformation of political, social, cultural, spiritual spheres, etc. They have arisen up against social and political oppressions and also brought changes at the grassroots level. For example, poets in Indian history like Kabir have challenged the dogma of those times. He spoke against the exclusivist behavior of society in the name of caste system. This tradition has still been trickling down the contemporary times, but their role are more or less unacknowledged by history. Now, if we talk about ancient and modern history, the poets have played the role of a friend, philosopher, and guide. Like all we know about like Kalidasa is a well-known court poet in the place of Chandragupta II. He wrote many plays like Abhigyan, Shantukalam, Meghdutta, Ritu Sambara, etc. Their guidance of kind was very important for the kingdom. In the same way, Chand Bardai was court poet of Prithviraj Chauhan, and along Abdur Rahim Khan was also a court poet of Akbar. Now, in freedom struggle, poetry was used as a powerful ambassador that has the ability to connect with the masses quickly. The words of poets were used during the freedom struggle by all strands of freedom struggle, by all strands of freedom fighters, like Sarfaroshi Ki Tamanna. This poem was written by Ram Prasad Bismil to energize revolutionaries in the Indian freedom struggle. Even tribal communities in India used poems to mobilize people against British imperialism. Like Bhil tribes of MP's song Na Manure Angreza was used to mobilize tribal communities Good, for their rights. very good. Similar kinds similar kinds of songs and poems are seen in the Munda rebellion as well. Similarly, Chattopadhyay's Bande Mataram was first published as a poem in the novel Anandmat as a rallying cry of the character of creating enthusiasm and courage among the people. Later, the same poem was declared as the national song of India, legislated the feeling of unity among the people. Along the same line, the national anthem written by Rabindranath Tagore is still sung on national festivals like Independence Day or Republic Day, as well as playing tournaments at the international level. Even after independence from British imperialism, the works and the role of poets have not been given due respect.
Like during partition, Faiz Ahmed Faiz, one of the greatest Urdu poets, opposed partition. His writings were so progressive that he was nominated for a Nobel Prize in the field of literature 4 times. He considered himself a world citizen. In 1977, when General Ziaul Haq came to power, he tried to establish a theocratic state in Pakistan. Faiz wrote numerous poems like Hum Dekhenge and organized mass protests opposing Zia's regime. During emergency, leaders are arrested. It was prowess of poetry that mobilized people for freedom. Subsequently, like Jay Prakash Narayan gave a famous speech in Ramlila Maidan in New Delhi, where he read out the revolutionary poem written by Ramdari Singh Dinkar, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है. Yes. Even today, it is said that whenever a fictional writer faces a crunch of ideas, he or she should read poetry. Even Yes. in recently, India witnessed a protest above farm bills in 2020. Whites wrote poetry and sang before the farmers to keep them high. It was indeed true that the movement was started, but it was sustained by artists like poets. In conclusion, uh, we can say that indeed poets have played very important role in different spheres, but they are unacknowledged. They have been the best to exercise Gandhi's talisman. It means they are the voice of voiceless people standing at the lower strata. Right from the days of Mahabharata, the truth is known. Kauravas were much more powerful in sword and the size of their infantry, but they lost in the hands of Pandavas because Pandavas had Krishna and his poetic truth. Bhagavad Gitas to ignite and propel them forwards. Thank you. ब्यूटीफुल, बहुत बहुत अच्छा बोला है, आप तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो. वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. सी रफी, रफी का सबसे बढ़िया जो बात था, ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बात रखी. सबसे अच्छी बात जो और बहुत अच्छा बनाता है वो होता है कंटेंट का रेलेवेंस. ये जो टॉपिक था इसमें क्लियरली हमें बोलना था, पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. लेजिस्लेटर्स क्या होते हैं? काम करवाते हैं, काम करवाते हैं या कानून बनाते हैं, प्रथा एस्टैब्लिश करते हैं, एक नई डायरेक्शन दिखाते हैं, एक नया गाइडेंस दिखाते हैं. ये बहुत अच्छे से समराइज किया. और स्टाइल देखो, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्टाइल में किया. हिस्ट्री मतलब एंशियंट से स्टार्ट किया, फिर मेडाइवल में आए, फिर मॉडर्न में आए, फिर इंडिया का एग्जांपल दिया, वर्ल्ड का एग्जांपल भी दिया. कंटेंट बहुत अच्छे से वेल वेल क्यूरेटेड है. दिस इज वेरी गुड. और आपका अप्रोच भी बहुत अच्छा है रफी. दिस इज रियली रियली नाइस. वेल डन, Thank you, sir. वेल डन. यस. हाय हाय सृष्टि. Hello, sir. Good morning. Am I गुड audible? मॉर्निंग. यस, यू आर ऑडिबल. Okay. Good morning to one and all. I am Shrishti Devari, and today I'm here in front of you to present my views on the topic. A ship in harbor is safe, but that is not what a ship is for. A remarkably beautiful and deeply meaningful idea by a prominent American author and businessman, John A. Shedd. And like everything in our beautiful world itself that exists in the multiple shades of gray rather than any single gradient of black and white, this code too could be interpreted on many different levels. With the most prominent idea being that, although it may be tempting to stay in one's comfort zone, true success lies in taking risk and venturing outside of it. Just like a ship sailing to the open seas for adventure, discovery, and a new beginning. But also, it sheds light on how valuable a harbor is for the ship, a place of safety from the storm to replenish, disembark, and restock with supplies before setting sail again. Like the idea of simply stagnating within our comfort zones, which, by the way, is not just an area or place where we feel safe, but also relates to any situation, habit, or thought patterns where we've conditioned our mind to always revert back in case of any adversity. And as much of an oxymoron as it may appear to be, people often find refuge in certain toxic situations that our brains have recognized as its resting state.
And so we often do not bother to break free out of such habits and situations which are pushing us further into despair and complacency, as immortalized perfectly in the song lyrics of Heavy by Linkin Park, that I keep dragging around what's bringing me down. If I just let go, I'd be set free. I'm holding on. Why is everything so heavy? It signifies all the heavy baggages of mediocrity and dullness that we often hold on so tightly to, that have now become our idea of a comfort zone, and which is indeed preventing us from reaching great heights in life. Like an addict clinging on to their addictions, or a student unwilling to do the hard work which can lead them to success, or a society clinging on to the idea of a glorious past and highly conservative approaches, unwilling to move pace to pace with the changing times and being open to new ideas and ideologies to become a more cohesive and harmonic unit. But our comfort zones aren't all bad. Rather, like everything else in life, they are what we make them to be, and hence they can be highly beneficial to us as well. As explained beautifully by Brene Brown, a prominent American author and professor, that comfort zones are those states of being where our uncertainty, scarcity, and vulnerability are minimized, where we believe we'll have access to enough love, food, talent, time, admiration, and where we feel we have some control. And such it is, as a person's growth is not only limited to happen outside their comfort zones, rather it is far easier for us to grow and succeed when we are within our comfort zones and have full freedom to explore our talents with a sense of inner peace and fulfillment. Therefore, to find a middle ground, to not dwell within our stagnancy of our comfort zones, and to explore our talents in a zone of safety, we can try to expand our comfort zones to gain new exposure while not threatening our sense of security and inner peace. And this we can do by trying out new things one step at a time to avoid being overwhelmed like a fish out of water. And thus, begin by focusing on things which we can control and muting out things that we can't. Then you'll find peace, as is quoted perfectly by our Srijan India One Telegram channel. So, here I'd like to rest my words by saying that comfort zones are yet another tools in our inventories whose outcomes depend on the way of how we wield them. That is, either in a self-destructive manner of stagnancy or complacency, or in a creative and constructive manner of vibrancy and inner peace. Thank you and have a wonderful day ahead. वेरी गुड सृष्टि, आज का देखो कितना कंसाइज है, टू द पॉइंट है, और टाइम बाउंड मैनर पे भी हमने कंप्लीट किया, एंड इट इज सो एंगेजिंग, सो एंगेजिंग. आपने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए, फ्लो बहुत ब्यूटीफुल है, एंड द वे जो आप वॉइस मॉड्यूलेशन है और जिस तरीके से आपने एंगेजिंग वे में बताया, दिस इज रियली रियली नाइस. कंटेंट कोड से स्टार्ट हुआ, वेरी नाइस, हार्बर. और सबसे अच्छी बात है कि हमने एक्सट्रीम्स पे नहीं गए. एक्सट्रीम्स इन द सेंस कि कई बार हम ओवरटली चार्ज हो जाते हैं कि सारे कंफर्ट जोन को ड्रॉप करो, गो फॉर एडवेंचर, दिस एंड दैट. नो, यू हैव टू लाइक फॉलो योर हार्ट, बट टेक योर ब्रेन अलोंग विद यू. टेक योर ब्रेन अलोंग विद यू. एक्सट्रीम्स में नहीं जाना चाहिए. वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करना है, उससे बाहर निकलना है, एक्सप्लोर करना है, नई चीजों को देखना है. वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा Yes, मैसेजिंग sir. है. वेरी वेरी मैच्योर थॉट प्रोसेस, वेरी मैच्योर थॉट प्रोसेस. वेरी गुड, वेरी Thank you, sir. Thank you, yes. everyone. Hi Madhav. Hello, sir. Hello, Hello. hi Madhav. Yes, Am I audible? yes, you are audible. So my name is Madhav Singh Rathore. Yes, Today's topic is a ship in harbor is safe, but that is not what a ship is for. yes, Imagine a big beautiful ship sitting in a calm and peaceful harbor. It looks grand and majestic, surrounded by safety of harbor walls. Inside, the crew feels secure and protected from the wild waves and the storm of the open sea. But as we look at the impressive ship, we must remember one crucial thing. A ship in harbor is safe, but that's not what a ship is for. This simple yet profound statement teaches us an essential life lesson. Just like ships
Purpose is to sail the vast ocean, explore distant land, and purpose in life is not remain in our comfort zone. We are meant to venture out and take risks and embrace new experience. Let me share you a short story. At this point, once upon a time, a small coastal village. There lived a young boy named Rahul. He was loved the sea and spent hours watching a ship sail in out of the harbor. Rahul dreamed of becoming a sailor, exploring the world and seeing far-off places. One day, as he watched a ship preparing to set sail, Rahul's friend Ravi said, "Why do you want to leave the harbor? It's safe here. You can enjoy the view without facing any danger." Rahul smiled and replied, "I understand that harbor is safe, but it is not what a ship are for. I wanted, I want to see what lies beyond the horizon. I want to discover new land and experience the world beyond this harbor." Ravi surged and said, "Well, that sounds risky. You might encounter a storm or get lost in vast ocean." But Rahul was determined. He believed his dreams and knew that every adventure comes with challenges. He bade farewell to his family and friends with a heart full of excitement. He joined the crew of ship and ready to set sail. As the ship moved away from the safety of harbor, Rahul felt a mix of fear and exhilaration. The sea was vast and unpredictable, but he knew that this was what he was meant to do. He learned to navigate through rough water, face a storm with courage, and find the way using the star in night sky. During their journey, Rahul and their crew encountered many adventures. They visited colorful islands, experienced different cultures, and made lifelong friendships. Rahul's heart swelled with gratitude for choosing to leave the harbor and embrace the unknown. A year later, Rahul returned to his village as a seasoned sailor. He had experienced the beauty and challenges of an open sea, and he had become wiser and more confident because of it. The villagers gathered around him, eager to hear about his adventure. While a smile, Rahul said, "A ship in harbor is safe, but that's not it what a ship is for. Leaving the harbor was the best decision I ever made. It taught me that life's truest joy and discoveries lie beyond our comfort zone." So, my dear friend, let us learn from Rahul's story. Like a ship in harbor, we may feel safe in our comfort zone, but we should not be afraid to venture out and explore the vast possibility life has to offer. Let us embrace challenges, take risks, and sail bravely towards our dreams. For it is when we step out of the harbor that we truly find our purpose and experience the magic of life. Thank you. Thank you, everyone. बहुत अच्छा बोला है माधव, आपने बहुत अच्छा बोला है. मैसेजिंग इज सो ब्यूटीफुल, मैसेजिंग इज सो ब्यूटीफुल. और स्टोरी के फॉर्मेट में उसे बताया कि डर सबको लगता है. इट इज ओके टू फील अफ्रेड. फियर सब में होता है, पता है, सबको डर लगता है, सबको डर लगता है. बट द पॉइंट इज, डर के साथ हम करेजियस भी होते हैं, करेजियस भी होते हैं. सो करेजियस होना चाहिए हमें. फियर, एब्सेंस ऑफ फियर इज लाइक कॉमन. फियर इज मदर नेचर, हर किसी को फियर होता है. बट साथ ही साथ हमको करेजियस भी होना है ताकि हम उस फियर को ओवरकम कर पाए. हमको डर लग रहा है, बट हम उसको ओवरकम करेंगे. अभी पब्लिक स्पीकिंग में काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा, पैल्पिटेशन होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाता है, बट उसको ओवरकम करना है हमें, ओवरकम. आपने बहुत अच्छा बोला माधव, आपके पॉइंट्स भी देखो कितने ब्यूटीफुल थे, और स्टोरी के वाइज आपने बताया. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मैसेजिंग, कि वो जैसे ही अपने डर को ओवरकम किया, वो वाइजर हुआ और वो कॉन्फिडेंट हुआ. दिस इज गुड. वॉइस मॉड्यूलेशन भी आपका अच्छा है ना. दिस इज रियली गुड. बस इसी तरीके से मैं और बेहतर 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 और इसको इम्प्रूव करते जाना है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. हाय हाय शैलजा. Hi, sir. हाय. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल. My topic is forest, आप आंध्रा से बोल रहे हैं, है ना? Telangana, sir. यस यस, तेलंगाना. आई एम ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना. यस, हैदराबाद में Hyderabad. रहता हूँ मैं. यस, मैं भी Hyderabad. हैदराबाद में ही रहता हूँ. यस यस यस. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो कंटिन्यू. Forests provide a wide range of the economic benefits that are essential for sustainable development. The provision of the raw material, timber, paper, and other industrial, non-timber forest products such as a barrier nut and medical plants.
One of the most important economic benefit of the forest in the provision of the raw material for the timber industry. Timber used wide range of the product, furniture and paper product. The forest sector is a major contributor to the global economy. It is estimated that around 1.6 billion people depend on the forest for the livelihood. Forests also play the artificial role the regulating the earth climate. The tree absorbs the carbon dioxide from the atmosphere and the storing the biomass. The natural accept consisting forests that are the characterized by the regular regeneration of the energy and food cycle. The metallurgical companies such as a Tata Steel is depend upon the various departments such as the research and department team that explore newspaper of iron ore. The survival of the company such as a ecosystem require resilience. The resilience depend on the three T abilities, the namely recovery from the losses, managing losses, avoiding of the losses. For instance, the hospitality industry like that ITC group of the hotel suffer hug losses during the COVID-19 pandemic. Thank you, sir. गुड गुड कंटिन्यू, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो. कंटिन्यू. कुछ मैसेजिंग भी कर सकते हैं हम लास्ट में टुवर्ड्स द एंड, कुछ मैसेजिंग कि फॉरेस्ट क्यों जरूरी है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, है ना. कंक्लूड कर सकते हैं. थिंक. यस Sir, यस wise शैलजा. यस यस sir कंटिन्यू डर लग रहे कंटिन्यू. थोड़ा से. आप बहुत, अरे बहुत, कितना ब्यूटीफुल बोला है आपने. टू द पॉइंट बात करते हो. दिस इज सो गुड. केस स्टडी बताया आपने अच्छे से, फिर टिम्बर प्रोडक्ट बताया, लाइवलीहुड, रेगुलेशन, क्लाइमेट, बायोमास. दिस इज सो नाइस. सो कंटिन्यू कंटिन्यू, कम ऑन. और बोलो आप. यस. कुछ कंक्लूडिंग पैरा बताइए इसका. थिंक. यस कंटिन्यू. टेक अ डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू. यस. शैलजा आप बहुत Sir, अच्छा बोल रहे हो. देखो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं. बहुत अच्छा बोल रहे हो आप. कंटिन्यू. यस. sir नेक्स्ट क्लास में बात करना. तो डर चलो लग ठीक रहे. है. अरे डरना नहीं है, डरना नहीं है. देखो अभी 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 तेलंगाना का फॉरेस्ट है ना. तेलंगाना के फॉरेस्ट में सबसे अच्छी चीज क्या होती है? कैन यू टेल? कौन से टाइप का फॉरेस्ट है ना. वी आर हैदराबादी पीपल. हैदराबादी पीपल डरते थोड़ी है किसी से. यस. सो फॉरेस्ट कौन सा फॉरेस्ट है यहाँ पे? सेमी डेसिडुअस फॉरेस्ट है यहाँ पे, है ना. यहाँ पे किस टाइप का कल्टीवेशन होता है? अच्छा, फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या क्या होता है यहाँ पे? रेड सैंडलवुड है, कितने सारे हैं यहाँ पे. तो यस, यहाँ पास में नेशनल पार्क्स भी है, फॉरेस्ट एरिया भी है. और उससे देखो तेंदू लीव्स होता है, तेंदू लीव्स होता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है. आंसर. अच्छा, यहाँ पे ट्राइब्स कौन सी है? कैन यू आंसर? आंध्रा में कौन सी ट्राइब्स रहती है? चेंचू सर. चेंचूस ट्राइब्स रहती है. वेरी गुड. और चेंचू ट्राइब्स किस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट होती होगी? जंगल में डिपेंडेंट होती होंगी ना. इनका लाइक वर्क क्या होता है? यस यस. सो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं, चीजों को लिंक कर सकते हैं, है ना. आपने बहुत अच्छा बोला है. दिस इज रियली रियली गुड. जैसे टाटा स्टील का कितना अच्छा आपने एग्जांपल दिया, टाटा स्टील का. और आपने एक और आईटीसी का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. आईटीसी. आईटीसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होता है बहुत सारा. नो. वेरी गुड. बहुत बहुत अच्छा बोला है. अब इसको आगे हम और कंटिन्यू करेंगे. ओके. थैंक यू सर. यस, वेरी गुड वेरी गुड. गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. शैलजा बहुत अच्छा बोला है आपने. सी एवरीबॉडी, दिस इज रियली गुड. वेरी नाइस. वेरी नाइस. Yes. All right then. Hi Priyanka. Priyanka Raghav. Hi Priyanka. Are you there? Hello Priyanka. Are you there? Hello, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Sir, I'm audible? Yes, you are audible. Okay. Yes, Priyanka, you are audible. Okay. Yes. Hello, everyone. मेरा आज टॉपिक है A ship in harbor is safe, but that is not what is ship. What ship is for. ये जॉन ए शेड जो कि एक ऑथर हैं, उनकी लिखी लाइन है, जिसमें अगर मैं हिंदी में बताऊं तो जिसका मतलब है जहाज
जो होता है वो बंदरगाह के अंदर ही सुरक्षित रहता है, लेकिन उसके लिए तो वह बना नहीं होता। तो इसी तरह से इंसान अपने घर पर सेफ रह सकता है, अपने कंफर्ट जोन में सेफ रह सकता है, लेकिन इंसान सिर्फ इसलिए नहीं बना कि वो सिर्फ घर पे रह के कंफर्ट जोन में रहे। हमें अपने एफर्ट प्रयास करते रहने चाहिए। तो इसकी मैं ये जो बात है, मैं महाभारत की एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगी। बात महाभारत की है। कौरवों की सेना ने द्रोणाचार्य जी की हेल्प से चक्रव्यूह का निर्माण किया था। जो वीर अभिमन्यु हैं वो जानते थे कि वो प्रवेश करना तो जानते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलना जानते। वो अपने प्रियजन की हेल्प ले सकते थे या उनका वेट कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जाने का निर्णय लिया और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे। बाद में वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें पता होता है समटाइम्स कि चीजें होंगी या नहीं होंगी, डाउट्स में होते हैं, लेकिन हमें फिर भी करते रहना चाहिए। अगर हम आज के समय की बात करें तो हमारा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित था। हमारे डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस सभी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहे और अपना अपना योगदान दिया। जो आज जिन्हें हम आज हीरोज ऑफ द वर्ल्ड या फिर कोरोना वॉरियर्स के नाम से भी जानते हैं। प्रयास करना बहुत जरूरी है। ये एक शक्ति का रूप होता है और हमें सक्सेस की तरफ गाइड करता है। इसी पे हमारे जो एक कवि हैं राहत इंदौरी, उन्होंने लिखा है, ना हम सफर ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात। आज आज आगे अगर मैं बात करूं आज की स्त्री के बारे में, तो वो भी आज जहाज की तरह तूफानों से लड़ रही है। वो चाहती तो आरामदायक जीवन के ऑप्शंस उसके पास हैं, चुन सकती है बहुतों के पास, लेकिन फिर भी हर एक जगह पर हर एक क्षेत्र में उनका योगदान मिल जाता है। जैसे अभी चंद्रयान 3 में जो मेन साइंटिस्ट थी ऋतु कार्यधल श्रीवास्तव, उन्होंने बहुत बहुत देश का नाम ऊंचा किया। और एनडीए में भी स्त्रियों की भर्ती स्टार्ट हो गई है। तो स्त्री के लिए किसी ने कहा है कि कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है। इसी तरह बैरिस्टर बाबा साहब जो एक बैरिस्टर थे, वो आरामदायक जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। सेना में भी हर एक सैनिक जानता है कभी ना कभी तो उसको प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे, फिर भी वो जाता है और हमारे देश की रक्षा करता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी गांधी जी सबने अपने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने कर्तव्य निभाए, जिससे आज हमारा देश आजाद हो सका और हम यहाँ तक पहुंचे। हमने अब मैं कंक्लूडिंग पॉइंट पे आती हूँ। हमने जहाज की उपयोगिता बहुत सारे एग्जाम्पल से बता ली, लेकिन हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अतः आवश्यक ये है कि हम जोखिम लें, लेकिन सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल भी देती हूँ मैं इसके लिए। एक 1991 में जब हमने एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट की, तो हमने अपने देश को ओपन कर दिया, क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी बना दिया। लेकिन इसके साथ साथ आज भी हम अपनी इन्फेंट जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है, उसके लिए हम टैरिफ लगाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, ताकि वो भी सुरक्षित रहें। इसलिए अतः मध्य मार्ग चुनते हुए हमें बैलेंस्ड लाइफ चुननी चाहिए और हमेशा अपने बुद्धि और दिन हर दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कबीर जी ने कहा है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी वेल पुट टुगेदर। सी कितने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए और अच्छे एंगेजिंग वे में किए। दिस इज रियली गुड। एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे हैं। दिस एग्जाम्पल वाज आल्सो रियली गुड। जैसे एलपीजी का एग्जाम्पल दिया, एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, विमेन एम्पावरमेंट। और दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड प्रियंका, आप बहुत अच्छा बोलते हो। दिस इज Thank you, वेरी sir. वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, हाय हाय नंदिनी। हेलो हेलो नंदिनी, आर यू देयर? हाय हाय नंदिनी, आवाज आ रही है? ओके, यस। हाय हाय नंदिनी, हाय नंदिनी। नंदिनी, आर यू देयर? ऑल राइट। नंदिनी, आर यू देयर? नंदिनी 1, नंदिनी 2, नंदिनी 3, आर यू देयर? ऑल राइट। हाय हाय दीपेश। दीपेश, आर यू देयर? देखो, सबका अटेंड करो। ऐसा नहीं है कि बस अपनी बारी हुई बोले और निकल गए, ऐसा सही नहीं है।
पीयर लर्निंग तभी तो होगा जब आप सबका सुनोगे, और जब आप सबका सुनोगे ना तो आपको सबसे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी. ओके. यस. हाय हाय दीपेश, आर यू देयर? Hello, sir. यस. हाय हाय दीपेश. Hello, sir. यस. यस. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. यस. Sir, my topic is history is the series of victory won by the scientific man over the romantic man. क्या बात है, वेरी नाइस. Romantic man is an individual who is a dreamer. He has a lot of feelings, idealism, and imagination. A romantic man is the filled with hopes, faith, and feelings. A romantic man goes through with his faith. He trusts in divine foresight. When it comes to scientific man, the quality outcomes are logic, reality, concentrated approach, being driven by a purpose, having a strategy and plan and a clear cut procedure. A scientific man tackles challenges of life with a clinical mindset. A scientific man lives his life objectively. He is reliant on careful foresight and planning. History always remember winner, not loser, and the right strategy always win. Strategy is the fundamental characteristic of a scientific man rather than a romantic man. This is the reason why history is a series of victory won by the scientific man. However, there are several individuals within one person. Raja Ram Mohan Roy emphasized nationalism and a contemporary scientific approach and was heavily inspired by Western modern philosophy. The period of enlightenment and reformist modernization in India. He is also a social reformer known as the father of modern India Renaissance. He considered that rather than working to improve societal condition, religious orthodoxy were then causing harm to society, harming social interaction and causing individual problems and confusion. During the post Vedic period, the caste system was romanticized too much. It is too widespread in today's society as well. In the post Vedic period, the caste system was based on worth. This is the highly irrational system. The person who raised the voice against the caste system are considered to have done an act weight on human rationality and history remember them, such as V.R. Ambedkar, Jyotiba Phule, and Kabir, etc. They believe in the social equality of all human beings and thus were a strong opposer of the caste system. Rationalism and scientific temperament have been part of the Indian traditional since at least 6th century BC. Ajit Keshavalin, contemporary of the Buddha, was the earliest known teacher of complete materialism who spread any spiritual pursuit in life. The Constitution of India is a rational document which imposes on the government to govern the nation with rational approach. The Indian Constitution is enshrined with Article 51A(h), which encourages citizens to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and changes. Hence, the Constitution is also promoting rationalism and scientism. Scientism is the belief that science and the scientific method are the best means of determining the truth about the universe and reality. Yes. Romanticism is a literacy and artist movement that began in the late 18th century and emphasized inspiration, subjectivity, and the primacy of the person. Romanticism was both a response to rationality and a product of societal development. Rationality gained popularity and more individuals began to challenge the What happened? हाय हाय दीपेश, अच्छा बोल रहे हो, कहाँ गए? आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया है ना. दीपेश इज नॉट इन मीट एनीमोर. सी देखो, दीपेश भी कितने अच्छे से बताता है सारी चीजें. मैं अभी वापस जब ज्वाइन करेगा तब मैं फीडबैक प्रोवाइड करूंगा, है ना. ही इज डूइंग रियली गुड. गुड. अभी अभी दीपेश नहीं है ना, तो चलो थोड़ी तारीफ कर देता हूँ. मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए उसकी. दीपेश की सबसे अच्छी बात ये रहती है, पॉइंट्स कितने अच्छे बताता है, कट टू कट पॉइंट्स बताता है. ये है, ये है, ये है ना. दिस इज रियली गुड. ऐसी दीपेश की कॉपी देखा करो, जो नोट्स बना के वो भेजता है. दिस इज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी.
हर चीज ना एकदम रेडीमेड ऐसा रहता है कि बस एग्जाम के एक दिन पहले उसको देख लो, आपका सारा तैयार हो जाएगा अच्छे से. नो, दिस इज रियली रियली गुड. यस, दीपेश इज बैक. यस, दीपेश इज बैक. My network connection is bad. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Sorry, चलो sir. जल्दी से कंक्लूड करो. यस. Sir, one second. Yes, conclude. Yes, sir. Sir, all our knowledge begin with the senses, proceed then to the understanding, and end with reason. There is nothing higher than reason. So thank you so much, sir. वेरी गुड. देखो दीपेश, आप बहुत अच्छा बोलते हो और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड है. दिस इज रियली गुड. हमें इसको बढ़ाना है और देखो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, बस रेगुलरली वर्क करना है. आपका पहले दिन का और अभी का देखो कितना अच्छा हो गया है. अभी नेक्स्ट क्लास में देखना ये और भी बेहतर होगा. जस्ट Yes. कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ. कॉन्टेंट वाइज, मॉड्यूलेशन वाइज, वर्ड्स जो चूज कर रहे हैं सारे, आप बहुत सही डायरेक्शन पे जा रहे हो. जस्ट इसको कंटिन्यू करना है. मैं ओके. यस, Yes, sir. वेरी गुड, Thank वेरी गुड दीपेश, वेरी नाइस. हाय हाय अरुण. Hello, sir. Good morning. हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. Good Yes. afternoon. यस. So, my topic is history as a series of victorious. अरुण men. थोड़ा माइक पास रखो, माइक पास रखो, आवाज Hello. लाउड आएगी. यस. My topic is history is a series of victorious men, won by scientific man over the humanity. ओके. So, recently, government launched a new motto: Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anshuman. This means research and development will be an area of focus in the coming future. यस. But why is India's focus now shifted to research and development? If we look at our ancient history, India was highly scientific in its approach and led the world for many centuries. For example, Indian astronomy, temple architecture, Ayurveda, etc., to name a few. But much of our knowledge system was lost because of colonization. Britishers were able to outpower us because of their advanced artillery and defense. The same Britishers had a very tough time against Germany in world wars because of the superior German technology. But the US, having developed the atomic bomb, decisively defeated the Axis powers in 1943. These events are just a tiny glimpse. The fact that nations can be lost or won with the help of technology, whose foundation is science. This is why nations emphasize a lot on scientific advancement. Unlike fictional and idealistic approach, science is based on understanding of reality, which is the byproduct of curiosity. If Newton was a romantic man, he might have eaten that fallen apple and enjoyed its taste. But Very instead, driven by his scientific temper, he curiously observed the apple and discovered gravity. The romantic nation is away from reality. We know that during Indo-China War, instead of modernizing our forces, we kept saying Hindi chili bye bye and paid a huge price for it. India has missed the three buses of industrial revolution, but it will not lose the fourth one. The one who controls the AI will dominate the world. India is focusing a lot on AI technology, blockchain, semiconductors, etc. And India has enormous potential to. For example, we developed the COVID vaccines not only for ourselves but for the world. Institutions like ISRO, DRDO have created history. Now, if we want to promote science, curiosity and scientific temper needs to be inculcated in the children from a very young age. But even science can lead towards romanticism. For example, video games, virtual reality, which create an imaginary world for kids and have a negative impact on them. To be victorious, we must adopt a scientific approach and understand reality rather than living in a utopian world. But at the same time, we must be wary of its misuse also. Towards the end, I would like to say, if we act now and understand the power of science, India will be indeed a Vishwaguru in coming future. Thank you. यस यस यस, दिस इज रियली गुड, रियली गुड. अरुण, आप बहुत अच्छा बोलते हो. वॉइस भी बहुत ग्रेसफुल है आपका, जो बात करने का तरीका है, दिस इज वेरी वेरी ग्रेसफुल.
वेरी नाइस। पॉइंट्स देखो कितने अच्छे बताए यहाँ पे, स्टार्टिंग कितना अच्छा था, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और अभी इसमें जय अनुसंधान भी आ गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस एक्सेट्रा। तो द पॉइंट इज कि ऐसा नहीं है कि हम केवल इमेजिनेशन के एक्सट्रीम्स पे जाए, पर ऐसा भी नहीं है कि इमेजिनेशन को हम ड्रॉप कर दें। जब हम कोई चीज इमेजिन करते हैं, हमने इमेजिन किया, जैसे न्यूटन ने देखा एप्पल को, या फिर हमने फ्लाइट, राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट का इमेजिन किया, जब हम इमेजिन करते हैं तो ही फिर हम उसको रियलिटी में भी कन्वर्ट करते हैं। सो इट इज अगेन नॉट अबाउट गोइंग टू द एक्सट्रीम ऑफ इमेजिनेशन और एक्सट्रीमली साइंटिफिक टेक्निकल, इट इज अबाउट कॉम्प्लीमेंट करें दोनों चीजों को। बहुत वेरी वेल पुट टुगेदर, फाउंडेशन साइंस होना चाहिए, इररेशनल भी हमें नहीं बनना है। वेरी नाइस, वेरी गुड अरुण, दिस इज रियली गुड, वेल डन। हाय, हाय राम नरेश। Hello, sir. I am audible, Hello. sir. Yes, you are audible. Yes. Good afternoon, everyone. Respected sir and my dear friends. I am Ram Naresh, here today to speak about forest are the best case studies for economic excellence. According to Mahatma Gandhi, what we are doing to the forest of the world is but a mirror reflection of what we are doing to ourselves and to one another. Forest can be defined as the region with a high density of trees. Forest is the habitat for a variety of living beings, including the plant, animal, and microorganism. For instance, mango, neem, banyan, peepal, jamun, palm, teak, and sandalwood, and coconut, and many more. At the beginning, in the DPSP provided Article 48A, protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife, and also fundamental duties provide says that to protect, improve the natural environment. Accordingly, forests are the lungs of the natural that provide oxygen for us to breathe, survive, and maintain a healthy ecosystem. Forests have been a source of livelihood for millions of plants and animals on the planet. Forests provide food, fuel, and raw material for human beings to use and prosper. Forests help in preventing soil erosion and maintain and enhance the fertility of the soil. Forests help in the rain, and a forest amount of land is covered by forest. Forests are also provide tourist place such as national park, wildlife sanctuary, wetland, etc. Forest helps in balancing the ecosystem. Similarly, importance of forest: purification of the atmosphere, climate control, and wide range of utility. Bamboo forest source of wood and provided natural watershed and means of livelihood, and many more. Furthermore, forests are often considered as one of the best for economic excellence. This is because forests provide a wide range of economic benefits that are essential for sustainable development. These benefits include the provision of raw material for timber, paper, and other industries, as well as non-timber forest products such as berries, nut, and medicinal plant. In addition, forests also provide important ecosystem services such as carbon sequestration, water regulation, and biodiversity conservation. Along with, I would like to tell some Indian environmentalists. For example, Tulsi Gowda. She is an Indian environmentalist from Honnali village in Karnataka state, honored with Padma Award, famous as Cyclopedia of Forest due to her vast knowledge of diverse species of plant and herbs. And Rahi by Soma Popper and Himmata Ram Bambu and Sundaram Burma, who grew 50,000 trees
in the arid Shekhawati region of Rajasthan, using a water-saving technique, dryland agroforestry that require only 1 liter of water per tree. He has also set up the 6 nurseries. And so many Usha Chaumar and Anil Prakash Joshi, Baba Seva Singh, and Jadhav Mollai Payang, Forest Men of India, and Salu Murda and Thimka, and many more. Very good. Ultimately, forests are the essential part of our ecosystem, and thus it is our responsibility to preserve and protect it by using the government scheme like Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972 and National Afforestation Program and National Mission for Green India for our future generation, wildlife, species, and quality of life. That's it. Thank you so much, sir, and everyone. यस, देखो राम नरेश ने एक पॉइंट शुरू से पिक किया कि फॉरेस्ट मतलब इकोनॉमी, फॉरेस्ट मतलब इकोनॉमी। ये इकोनॉमी Yes. ट्राइबल्स की हो सकती है, ये इकोनॉमी जो लाइक ट्राइबल पीपल तो है, कोई एमएसएमई की हो सकती है, जैसे बैम्बू का एग्जांपल लिया। फिर बाद में कुछ बड़े एग्जांपल्स भी लिए इन्होंने कि किस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो लाइक इंडस्ट्रीज हुआ, फैक्ट्रीज हुआ, कंपनीज हुआ, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज हुआ, दे आर ऑल डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट सिस्टम। तो फॉरेस्ट इकोनॉमी है, ये बहुत अच्छा केस स्टडी है एग्जांपल्स के लिए। बहुत अच्छा बोला है आपने राम नरेश, इसी को अब अच्छे से ऐसे में भी कन्वर्ट करना है हमें। Thank you so much, sir, and everyone. Yes, very nice, very nice. Hi Varsha. Hi, sir. Hi. Good Yes. afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Let us continue. Hello, everyone. Yes. Okay, so my topic is history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. So, history. What is history? The study of past events which are particularly related to human affairs. Let's talk about its ingredients. Okay. Is it a victories of scientific man over romantic man? I would like to highlight over Indian history, which is the oldest civilization in which we have most ancient, peaceful, accommodative, pluralistic history. Yes. Are we romantic? What do you understand by romantic? Is romantic man always a lost man? No. We got a great example of Buddha. He had peace, empathy, compassion, humanism. How Ashoka Dhamma was also a romance. He was scientific before he win a lot of wars and victories with brutal power, military strength. But at the end, it was not victorious. He chose romantic man over scientific. He chose social welfare and followed the path of Buddha. So at the end, it is not always a victories of scientific man over romantic man. It can be reversed too. In COVID, we just not relied on vaccines and medicines. We saved so many lives with faith, trust, and positive energies. Thank you. Very good point. अरे और बोलो, अच्छा बोल रहे हो आप। फेथ बताया आपने, है ना, फेथ जरूरी था। कोविड में हमने बहुत सारा जो वर्क किया, इट्स ऑल बेस्ड ऑन फेथ, ऑल बेस्ड ऑन फेथ, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। Yes. लॉजिकली हमें लग रहा था कि वर्क डिफिकल्ट है, बट देन ऑल्सो हमने किया। इसरो का एग्जांपल बोलो, इसरो में रोमांटिसाइजेशन हो रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी से, एटसेट्रा से, हम मून मिशन भेज रहे हैं। से थिंक आप अच्छा बोल रहे हो, और बोलो अभी। यस यस वर्षा, और कोई अच्छा सा पॉइंट बताओ, क्विक। हिस्ट्री में मेडाइवल हिस्ट्री का एग्जांपल ले सकते हैं हम, है ना, मेडाइवल हिस्ट्री का। अभी प्रेजेंट डे में एज अ सिविल सर्वेंट हम एस्पायरेंट है, तो एक तरफ हम सपने भी देखते हैं, मसूरी जाएंगे, दिस एंड दैट, Yes, हम sir. Yes, देखते हैं ना, sir. ड्रीम्स Yes, देखते हैं sir. बहुत सारे। That is scientific, but Yes. we are in that romantic side too. यस, तो जो सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट होता है वो रोमांटिक भी होता है कि मेरे को मसूरी जाना है, And वहां पे मैं scientific ऐसे too. घूमूंगा, दिस एंड दैट, प्लस Yes. वो साइंटिफिक भी रहता है, वो पढ़ाई भी Yes. करेगा, रैशनल भी रहेगा, लॉजिकल भी रहेगा। Journey is both romantic Yes. and scientific both. Yes. We plan for the society and we also plan for their future.
Yes, yes, But we also enjoy the process. true. Process is also important. Journey, destination is important, so is the Yes, journey. yes. वेरी गुड वर्षा, आप बहुत अच्छा बोलते हो, वॉइस में स्पार्क है और आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें कॉन्फिडेंस के साथ कही है ना? दिस इज Thank you. रियली गुड। Thank you, sir. अब इस पे एक बहुत अच्छा ऐसे भी लिखाना है, अभी जॉब इज नॉट डन, अभी Yes, स्पीच yes. हो गया, I'll अभी write. ऐसे। I'll write. यस यस, ओके, Okay. वेरी गुड Thank you. वर्षा। Thank you, sir. यस Thank you, everyone. यस। हाय हाय नेहा। Hello. हेलो, Hello. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। यस Am I audible, sir? यस, यू आर ऑडिबल। यस नेहा, Okay, प्लीज sir. कंटिन्यू। Sir, यस my topic is a ship in harbor is safe, but that is not what ships are for. I will try to explain this quote with various examples. Uh, the quote, a ship in harbor is safe, but that is not what ships are for, is often attributed to John A. Shedd. First dimension is current affairs. INS Vikrant, India's first indigenous aircraft, has been commissioned last year, which marked India's footprints on global map. It showed India's Atmanirbharta in building such a big naval ship to accommodate growing India's needs and can provide maritime security in the Indian Ocean. Hence, the viability and mettle of ship is proved in open seas rather anchoring it to the shores. In this essay, it is provided how challenges can bring best of it rather sitting in one's own comfort. The following quote is defined in various ways to make realize the conditions and situations which makes it worth. Since there is saying that life begins at the end of your comfort zone. Let us see with historical dimension. If Christopher Columbus had not dared to sail through the open seas where there was no communication as well as no certainty of life, he wouldn't have discovered the New World America. In the same way, Vasco da Gama, he discovered new trade route to maritime trade route to India. These people had to sail in open seas to discover the new land as it cannot be found waiting and standing at shores. Similarly, there are several examples all around the globe, from Abraham Lincoln to Mahatma Gandhi to Dr. Ambedkar ji to Dr. APJ Abdul Kalam to Nelson Mandela. These are some personalities who face their challenges for the welfare of others. Moving after 75 years of independence, today in India we have first tribal woman President Ma'am Draupadi Murmu Ma'am as head of our Indian Republic. This shows the progress of a nation trying to break the shackles of social evils and caste barricades to come at forefront of nation and become national identity. From environmental point of view, one example is Chipko movement. This example shows how people came collectively for the root cause to protect the environment and to fight with the system. The attribute of comfort zone exists everywhere, but to prove its mettle, a person have to dive into the sea. There is no support and fight the storms and stand high. If we consider other side of the coin, security also matters. It is true that risk-taking capability is one of the important qualities, but sense of security is equally important. For example, India has opened its economy for LPG reforms in 1991, but it is directly controlled wherever it is indirectly controlled wherever it is needed. Lastly, in conclusion, safety is a nice idea, but imagining oneself as completely safe is not a good idea. Risk taking capability is one of the required skills of a good leader. Risk should be calculated by keeping some safety measures in hand because the risk is what ships are one built for. Risk without security is useless as same as security without risk. Thus, a वेरी fine balance is needed to maintain between these two, adhering to the principle of the middle path of Buddhism to extract utility out of it. Thank you so much, sir.
वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे से आपने Thank बोला you, everyone. कि हमें किसी भी एक्सट्रीम में नहीं जाना है, जिसे बोलते हैं ना बीइंग रिस्क अवर्स इज एक्चुअली मोर रिस्की। बीइंग रिस्क अवर्स इज एक्चुअली मोर रिस्की। चांस हमें लेना पड़ता है, रिस्क हमें लेना पड़ता है ना। दिस इज वेरी गुड। बोलते हैं ना स्पाइडरमैन को भी रिस्क लेना पड़ता है, सो दिस इज गुड, वेरी नाइस। एग्जाम्पल्स Thank you बहुत so अच्छे हैं। आपका वॉइस क्वालिटी जिस तरीके से आप बोलते हो, दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, बहुत सूदिंग है। दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड नेहा, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल। Thank अब you इसको so much, अच्छे से sir. हमें ऐसे में भी कन्वर्ट करना है, ऐसे में भी कन्वर्ट करना है। ओके, Okay, यस sir. यस Thank you, everyone. यस। हाय हाय राजेश, हेलो। Good यस afternoon, sir. राजेश, गुड आफ्टरनून। यस Sir, my यस topic राजेश। is a ship in harbor is safe, but that is not what a ship. राइट। This quote reflects the idea that it's essentially for individual organizations, nations, and to take risk venture beyond the familiar or यस comforting zone यस surrounding of the harbor in order to reach their goals. The harbor represents security and stability, but it is not where growth and progress occur. Instead, true success is found by leaving the harbor and navigate the uncertain water of the open sea. यस If यस राजेश, यस। in the historical scenario, हम्म voyage of Christopher Columbus in 1492 marked on the ambitious journey to find a water world westward route to Asia. The voyage was perilous, filled with uncertainty, and had no guarantee of success. Yet यस it led to world geographical यस, discovery of new worlds, वेरी गुड। contemplating completely changing world geopolitical landscape of the era. Life of great personality जैसे Albert Einstein, known for his theory of relativity. Einstein sailed out of the harbor of established new Newtonian physics. Despite significant criticism and resistance from some in the scientific community, he pursued his uh, यस, कंटिन्यू, बहुत अच्छा बोल रहे revolutionary हो राजेश। idea. यस Yes, sir. यस यस, Revolutionary कंटिन्यू। idea which fundamentally changed our understanding of space and ट्रू time. ट्रू। This is a testament to human spirit of the exploration and our uh, rare desire to push beyond establishment boundaries. For example, धीरे Chandrayaan धीरे 2. बोलो राजेश, धीरे धीरे Yes, sir. बोलो, और एक एक शब्द को चबा चबा के बोलो। चबा चबा के Yes, बोलना sir. मतलब धीरे, वजन, एम्फेसिस दे के बोलना है ना। Yes, sir. जैसे आप कुछ भी बोल रहे हैं, शिप इन हार्बर, है Yes, ना, sir. ऐसे धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बोलो शब्दों को, बहुत अच्छा Yes, sir. इससे हो जाता है ना। और बहुत Yes, sir. लाउड बोलो, कॉन्फिडेंट के साथ, Yes, sir. ऐसे, है ना। दिस गुड, This यस। is the testament to me, ये बात वेरी गुड। यस। human state of exploration and our where in desire, human state of exploration to push beyond established boundaries. For example, Chandrayaan 2, partially successful mission. If our ISRO scientist does not take the risk, they cannot get success. The moon mission, because risk pursue a new opportunity to become यस, to ISRO to that in sorry sir. अच्छा बोल रहे हो, बोलो। यस Because this pursue a new opportunity to ISRO scientists that the recently Chandrayaan 3 successfully demonstrations. यस, वेरी गुड। तो मतलब शिप जो है वो सेफ है हार्बर में, बट उसके लिए शिप नहीं बनी है, शिप बनी है Yes, चैलेंज sir. करनी। आप हिंदी भी बीच बीच में बोल Yes, सकते हो, है ना। हिंदी में अगर yes, कुछ sir. बोलना है, आप हिंदी भी बोलो, है ना। एक्सप्रेस करो, खुद को एक्सप्रेस करो। आप बहुत Yes, अच्छे sir. पॉइंट्स
सारे पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे हैं। This may तो trying a new experience and taking a new challenge or pursuing yes, a new careers. yes, very good, Sir, very conclude. good. Can I conclude, sir? Yes, please continue, please continue. Conclude, sir. I have no idea more September. नहीं नहीं, कितना अच्छा है, अच्छे से बताया ना। देखो कंक्लूजन ये हो जाएगा कि जैसे हिस्टोरिकल में देखा हमने न्यूटन का, एशिया का, वर्ल्ड का, कोलंबस नहीं जाता तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाता, वास्को डी Yes, गामा sir. नहीं जाता तो वो कंटिन्यू कर पाता। सो इन Yes, sir. कंक्लूजन Conclusion यहाँ भी पे कि a ship is harbor. Yes, sir. Can I conclude? यस प्लीज प्लीज कंटिन्यू। Conclusion is a ship in harbor is safe, but that is not what ships are for. वेरी गुड, वेरी Serves, गुड। serve as reminder that success and growth are not found in the comfort of the zone, but instead they are achieved by the venturing beyond the harbor and taking calculated risk. कैलकुलेटेड रिस्क, यस Yes. यस, वेरी गुड राजेश, Where बहुत it अच्छा is the बोला है आपने। personal development, या और organizational development, या national development. Relationship, individual and organization must be willing to enhance, embrace uncertainty, accept the risk involved, and take calculated risk toward their goals. By doing so, they will experience and growth, learn new yes, things, reach new yes, level of success that would true, not have been possible if the uh, remain in the harbor. यस, क्या बात है, वेरी गुड। मैसेजिंग देखो कितना अच्छा है कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो ग्रोथ होगा, सक्सेस मिलेगा, नया लर्निंग होगा, हमारा होराइजन बढ़ेगा, है ना? Yes, sir. यस यस, Thank you, वेरी sir. गुड। आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है, पॉइंट्स टॉपिक्स भी आपने बहुत अच्छे पिक किए। वेरी गुड राजेश, वेरी गुड। Thank you. यस यस Thank you. यस। हाय हाय मंजू, हाय मंजू, आर यू देयर? Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। यस Sir, my topic is forests are the best case studies for environment excellence. यस Saint Bernard once said, "Believe me, for I know you will find something far greater in the woods than in books. Stones and trees will teach you that which you cannot learn from the masters." Forests are often considered as best case studies for economic excellence. This is because forests provide a wide range of economic benefits, such as raw materials for timber, paper, glue, furniture, etc. Also, there are so many medicinal plants which are too much beneficial for our health without any side effects. As we all know that forests are the limbs of earth. Nobody can survive without it. Through forests, we can achieve sustainable development goals, climate change, which we pledged for till 2070. Uh, for for best economic also for best economic excellence, 3R is also very important. That is recycle, reuse, rebuild. These all can possible through forests. We can teach students in schools regarding tree saplings and conserve forests. There are so many young people around the world who took initiative for forests, such as started campaign like we are the change now. A young uh, a young a young youth who is a 21-year-old Akhilesh Anil Kumar is an MD of an NGO who took initiative for uh, promote who took initiative for promote and climate change initiative in schools and different places. Now there is the problem. The biggest problem in this all is that our forests are in danger. How? Because of deforestation, fire, and many more. People took less initiative in afforestation and conserve plants, which is very important. The death of the forest is end of our life. Not only forests, trees themselves provide us with the services in everyday life. Their shade helps to cool hot city streets. Now
I want to conclude that forest plays a very huge role in everywhere because the trees fill with magic and secrets. Thank you. Yes. बहुत बहुत अच्छे से बोलते हो आप भी, आपके पॉइंट्स भी बहुत अच्छे। हम ना बहुत लाउड हो, थोड़े से लाउड हो मतलब कॉन्फिडेंस से एकदम फ्री होके बोलना है, खुद को रोकना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है। आप बहुत अच्छा लिखते हो, आपका आंसर राइटिंग भी कितना अमेजिंग होता है मंजू, आप बहुत अच्छे हो। इसको ना बहुत कॉन्फिडेंटली बोलना है, बिना किसी झिझक के, डरे, अच्छे से फुल फुल वॉल्यूम में बोलना है, वॉल्यूम को कम नहीं करना है ना। और आपके पॉइंट्स, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। केस स्टडीज बताया आपने, कुछ यंगर पॉपुलेशन, यंगर जनरेशन के बाद फॉरेस्ट। सो अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है तो फॉरेस्ट उसका फाउंडेशन होगा, फॉरेस्ट एज अ फाउंडेशन विल बी रिक्वायर्ड। वेरी गुड, वेरी नाइस मंजू, वेरी नाइस। ये तरन का था क्या? तरन का फिर बाद में नीचे हो गया, ऐसा कुछ हुआ क्या? Good afternoon, sir. यस, हाय तरन। Yes, sir. It's my turn now. Sir, actually connection lose हो गया था तो मेरा hand ऑल raise राइट, हो ऑल गया। राइट, ऑल राइट। यस यस तरन, आप अभी बोलोगे या फिर मैं? No, sir. I can't speak right now. यू कैन स्पीक। सर अभी नहीं, यहाँ पर नॉइज बहुत होगा तो आप प्ले कर दीजिए। तरन एक्चुअली अभी तरन पाजी अभी ट्रैवल कर रहे हैं। सो क्या करते हैं, मैं इन्होंने वॉइस का भेजा है नोट, मैं उसको प्ले कर देता हूँ, चलेगा? बाद में फिर हाँ इसको जी, मैं कंटिन्यू कर दूंगा, हाँ है जी, ना? थैंक यू सर। यस यस, ओके। थैंक यू सो वेट, मच सर। यहाँ नेटवर्क है नहीं अभी, तो अभी बस मैसेज आया था मुझे। वेट अ मिनट। Please don't mind my good morning because I have recorded as per good morning. यस यस यस, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। मैं इसको वैसे प्ले भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं मोबाइल पे ही प्ले कर देता हूँ। आई थिंक ऑडियो अच्छा आएगा, नहीं आएगा तो फिर रिकॉर्डेड में अलग तरीके से प्रोवाइड करा दूंगा, है ना? यस। Yes, sir. Good morning, sir. Hello, everyone. My name is Taran, and today I'm here to explore the quote stated, "A ship in harbor is safe, but it is not what ship is for." He was born with silver spoon in the mouth, in a family with immense prosperity and richness. Pain, suffering, and scarcity was unknown to him. He was even shielded from minute pinch of needle. But this life of extreme comfort and pleasure did not last for long, as he was exposed to the reality of life. When he went outside his palace, he saw a man in his last days suffering from disease, a man begging for food, and a man laying dead. These sad realities of life ignited a fire inside him to discover the true meaning of life. He left his palace and went on to live a life of extreme austerity and meditation. Yes, it is the story of Siddhartha, who later became the epitome of peace and non-violence and was known as Gautam Buddha. Siddhartha could have lived a life of ultimate pleasure and comfort, which is free from all the pain and sufferings. But instead, he chose to devote himself for the cause of finding the truth of life. He did not confine himself on the shore. Rather, he went on to explore the vast, endless ocean of life because ships are made for sailing in deep ocean. Just like Gautam Buddha, each and every individual is gifted with few potentials and capabilities. But seldom we realize our own hidden potential. Many of us find ourselves content in our comfort zones. We are afraid to take risk, afraid of the unknown. Just like if ships remained on the shore instead of sailing, they would get rusted. Their engines and machineries would stop working. Similarly, when people become immobile and do not take risk, their talents, skills, and potential would start eroding. As the old saying pointed, stagnant water stinks. So a stagnant life too. That's why we must keep sailing instead of limiting ourselves. Because otherwise, we are going to miss out on the breathtaking beauty of distant shores, the vibrant cultures of a new lands, and the knowledge gained from different perspectives. It happens only when a ship embarks on a journey to discover the unknown.
Do you even realize you have so much to offer? Your talents, passions, and unique perspectives, all of it are meant to be shared with the world. We have the power to make a difference, to inspire others, and to leave a legacy behind. But this can only be achieved when we break free from our limiting beliefs and embrace our true potential. Because after all, life is a journey between B to D, where B stands for birth and D stands for death, and C stands for choice. This choice should be well calculated and must take consideration of our true potential. So I urge you all today to reflect upon your lives. Are you just sitting comfortably in the harbor, watching others take risks and explore the vastness of the world? Or are you ready to set sail on your own journey of growth, discovery, and impact? Let's step out of our cocoon and start sailing toward the goal we aspire for, to challenge ourselves and to make a difference. Only then we will truly understand the meaning and joy of a life well lived. क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. Thank you so much. क्या बात है, तरन पाजी रॉक्स, है ना? तरन पाजी रॉक्स. दिस इज रियली गुड तरन, आप बहुत अच्छा बोलते हो. दिस इज रियली रियली नाइस, रियली रियली नाइस. और जो कंटेंट का जो सिलेक्शन है ये भी बहुत अच्छा है. दिस इज वेरी गुड. जैसे हमने इसको कितने अच्छे से बैलेंस किया, है ना? आपने कंटेंट पे भी ध्यान दिया. इसमें कंटेंट मतलब अप्रोच होता है. अप्रोच मतलब जिस पर्सपेक्टिव से उस टॉपिक को हमने देखा, जिस पर्सपेक्टिव से. इसकी आप स्टार्ट देखो, स्टार्ट जो था, और एंड देखो. एंड में जैसे जो हिंदी कोट यूज हुआ, दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव. बहुत इफेक्टिव था ये. और जो वॉइस का मॉड्यूलेशन होता है जिससे हम जो लिसनर है उससे कनेक्ट कर पाए अच्छे से, दिस इज रियली गुड. तो इसी को ऐसे कंटिन्यू करना है और इसको और फर्दर रिफाइन करने की हमें कोशिश करनी है ना? यस. और इस पे अभी एक ऐसे भी लिखना है. तरन पाजी की हैंड राइटिंग भी बहुत सुपर डुपर ऑसम है और डायग्राम वर्क तो बहुत ही सुपर डुपर ऑसम है ना? यस यस. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Yes, yes, yes. Very good, very good. So, yes. Hi, Nikunj. Hello, sir. Hello, everyone. Hello. Am I Hello. audible? Yes, you are audible. Okay, sir. So my topic for today is a ship in harbor is safe, but that is not what a ship is for. This age-old saying holds a profound truth that extends beyond the maritime realm into our daily lives. A ship is designed for much more than simply remaining docked in a safe harbor. Its purpose lies in exploring the vast open sea, conquering distant horizons, and embarking on adventures that lead to new discoveries. Similarly, as humans, we too are meant to break free from the confines of our comfort zones and embrace the challenges that propel us towards the growth and fulfillment. Staying in harbor does offer some undeniable advantages. The calm water provides a sense of security, shielding us from the storms and uncertainties from the outside world. It allows us to rest, recharge, and find solace in familiar surroundings. The harbor becomes a sanctuary where we can gather our thoughts, reflect on our journeys, and prepare for the next voyage. In life, these harbors can be seen as the routines and familiar patterns we build for ourselves. They can be the jobs that offer stability, the relationships that provide comfort, or the routines that offer predictability. There is nothing inherently wrong with seeking security and stability. It is an essential aspect of human nature. However, there is a fine line between finding comfort and becoming stagnant. The true purpose of life is not to remain static and unchanging, but to evolve, adapt, and grow. Just as a ship's purpose is to sail, explore, and discover, our purpose is to embrace new challenges and venture into the unknown. When we leave the harbor, we encounter a world full of opportunities and possibilities. It is in the face of challenges and uncertainties that we truly discover our strengths and capabilities. We develop resilience, creativity, and adaptability. The journey might be riddled
with obstacles, but it is through overcoming these hurdles that we find our true purpose and potential. Leaving the harbor requires courage and willingness to take risks. It means being open to change, embracing discomfort, and accepting that the failure is a part of the journey. But it is through these experiences that we grow and learn and become the best version of ourselves. So let us remember that while the harbor may offer security, it is not it is not where our true purpose lies. Life is meant to be an adventure, a voyage of self-discovery and growth. Embrace the challenges, dare to sail into the unknown, and uncover the treasures that await you beyond the safe shores. As the ship finds its purpose on the open sea, so do we find a purpose by embracing the journey of life with courage, determination, and an unwavering spirit. Thank you, sir. Thank you, everyone. क्या बात है निकुंज, आपका थॉट प्रोसेस बहुत मैच्योर है और जिस तरीके से आप बात बोलते हो, यस, चॉइस ऑफ वर्ड्स है ना, देखा कितना अच्छा था आपका, जो जिस जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला, जिस टोन में बोला, और बहुत ग्रेविटी है, एग्जाम्पल्स भी आपने यूज किए ना, डेप्थ है, ग्रेविटी है। दिस इज रियली गुड निकुंज, आप ऐसे में बहुत अच्छा करने वाले हो। आपका ऐसे भी मैंने पढ़ा था जो आपने भेजा था, रियली गुड, बहुत अच्छा है आपका। तो दिस इज वेरी नाइस। अभी जर्नी स्टार्ट ही है हमारा, हमको सारी चीजें ऐसे ही बहुत मेच्योरिटी और डेप्थ के साथ सारी चीजें देखनी है ना, और हार्डवर्क कंटिन्यू रखना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको कंटिन्यू करना है। लॉजिकल था, सबसे अच्छी बात थी, लॉजिकल था आपका, कोई भी पुश नहीं हो रहा था, कोई भी जो आर्ग्यूमेंट था ना वो पुश नहीं हो रहा था। इट वॉज वेरी लाइक फ्लो था उसमें। दिस वॉज रियली गुड, वेरी गुड निकुंज, वेल डन, वेरी नाइस। अब इस पे एक बहुत अच्छा सा ऐसे भी हमें प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सर। यस, हाय चंदन। Hi, sir. Good morning, sir. Good Sorry, good afternoon, morning, sir. good afternoon. Yes. And Always so good energetic and afternoon. like, Sir. yes. Hi Chandan. Yes. Okay, sir. Yes. So Yes. today's my topic is a ship in harbor is safe, but that is not what a ship is made for. It Yes. means that if anyone wants to do great things, he has to leave his comfort zone. True. A metaphor of ship in harbor is powerful one that can be applied to many areas of life, from personal growth to organizational development. It's a life lesson that individual must venture beyond the harbor into the unknown and take risks. By stepping out the harbor, individual can experience growth and achieve their goals. Like as we aspirants prepare for UPSC exams, there's a chances to clear the exams only when we venture into sea and face the challenges, as not sitting at the harbor. Many life stories are there. The struggle of Princess Siddharth with himself makes him Bhagwan Buddha. Our freedom struggle, many types of hardship faced by our freedom fighters, only when they sacrifices their life also. The struggle itself is a big success. The concept of ship in harbor is also applied to personal relationships, the relationships that are willing to venture beyond the harbor. By taking new experiences, communicating openly, and taking risks are more likely to grow and succeed. Similarly, organization can become stagnant if they remain in the harbor. An organization company that is willing to venture beyond the harbor by taking risks and pursuing new opportunity, it is more likely to grow and succeed. However, it is important to note that the risk should be calculative, and it does not mean simply jumping into unknown waters without proper preparation or consideration. By taking a calculated approach, we can minimize risk involved and maximize the potential reward. Thank you. क्या बात है, टू द पॉइंट बताया है, और बहुत अच्छी आवाज में देखो कितना दम रहता है, एंथुजियाज्म रहता है। सो ये भी हमें ध्यान रखना है। हम जब भी बात करें ना, ऐसा नहीं हो कि हम बहुत डल साउंड कर रहे हैं या बहुत बोरिंग साउंड कर रहे हैं। नो, यू हैव टू बी हैव दैट स्पार्क इन योर वॉइस, वो एनर्जी होना बहुत जरूरी है। चंदन ने बहुत अच्छे से बात किया यहाँ पे, और पॉइंट्स ऑब्वियसली बहुत बैलेंस थे।
चैलेंजेस हैं, कम्युनिकेशन जरूरी है। कई बार जैसे आप ये बड़ी बड़ी कंपनीज देखो ना, जैसे होंडा जो थी, इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट था वो कुछ और ही था। जैसे कि नोकिया पहले फोन मैन्युफैक्चरर नहीं था, मोबाइल मैन्युफैक्चरर नहीं था। नोकिया जो था वो पहले टॉयलेट पेपर्स बनाता था, फिर बाद में उसने ऐसे खुद को इवॉल्व किया और वो फिर मोबाइल एंड अदर इसमें चला गया। तो कंपनीज भी खुद को री इन्वेंट करती है। ओला जो था पहले ये टैक्सी कैब सर्विस का अभी भी है, बट ओला अब अपने को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। सो दिस इज हाउ लाइफ का यही मतलब भी होता है कि हम अपने रूटीन वर्क में जो अपना चल रहा है उसमें ठीक है, बट एट द सेम टाइम हमको पुश भी करना चाहिए, एक्सप्लोर भी करना चाहिए, नए नए एवेन्यूज ढूंढना चाहिए। वेरी गुड चंदन, वेरी नाइस। Thank you so much, sir. Thank you, Yes, sir. very nice. Hi, Sapna. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. Good afternoon, everyone. Yes. First of all, sir, thank you so much for giving me this opportunity. My topic is a ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. Yes. Is often attributed to John Shedd, a prominent American author and businessman. The quote suggested that although it may be tempting to stay in one's comfort zone, true success lies in taking risk and venturing outside of it. The biggest risk a person can take is to do nothing. It was said by Robert Kiyosaki. Taking risk in life is a form of success in itself because you might either succeed or have a more rewarding experience. Experience always comes through the path of self-explanations. That is, getting experience is pretty self-explanatory in itself. First, you try to explain all kinds of expected consequences of taking dangers. Facing danger is just like the ship trying to tackle and manage itself in the ups and downs of the ocean. A ship may be secure in the port, but if you needed security, you should be construct a castle rather than a ship. Ships at the port are almost worthless. They run into dangers after leave the port. A ship is designed to navigate the ocean, break through waves, endure bad weather, and go to far off locations to achieve its purpose. Taking a calculated risk is fundamental requirement of human existence. Our nation got freedom from the rule of British Empire in 1947. This tremendous achievement is result of struggle and hardship faced by our freedom fighters. Rani Lakshmi Bai, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and several others have sacrificed their lives. Struggle culminate in big success, and struggle in itself is a big success. Struggle of Prince Siddhartha with himself makes him Bhagwan Buddha. Risk, dangers, and struggles are the dispensable part of life. Facing and struggling in life is not a danger or risk, but avoiding or running away from struggle is risky and danger. It destroys entire life for people because this kind of mental tendency makes the individuals feel comfortable, but in actually it acts like sweet poison and also destroy the individual gradually, and individuals is not able to recognize his process of destruction. At last, I want to conclude this by saying a quote written by philosopher Friedrich. अस्तित्व का सबसे बड़ा फल और सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करने का रहस्य खतरनाक तरीकों से जीना है। धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या बात है, वेरी गुड। सो दिस इज गुड, लॉजिक इज वेरी क्लियर कि हमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाना चाहिए लाइफ में, कंफर्टेबल लाइफ नहीं होना चाहिए, है ना? यस, है ना? यस। हाँ, टॉपिक में ज्यादातर लोगों ने ये टॉपिक चूज किया है, शिप इन हार्बर। इसको भी हम और इवॉल्व करते हैं। देखो अभी आज 3rd या 4th क्लास है और लेवल देखो अपनी क्लास का कितना अच्छा हो गया है। रिमेंबर पहली क्लास थी एंड व्हाट आई सजेस्टेड टू एवरीवन, गिव अप मत करना, ये फर्स्ट है, सेकंड में और चीजें बेहतर होगी, थर्ड में और चीजें बेहतर होगी। तो अभी ये 3rd या 4th क्लास है एंड लुक एट द लेवल, जिस तरीके से सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे सब आंसर्स दे रहे हैं,
दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, और ये विद इन अ मंथ्स टाइम हुआ है, विद इन अ मंथ्स टाइम। तो अभी आखिर के 9-10 महीने और हम पढ़ेंगे तो सोचो हमारा लेवल कितना अमेजिंग हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू सजेस्ट यू। ग्रेजुअली हमें चीजों को इम्प्रूव करना है, रिफाइन करना है, ये चीज ना सस्टेनेबल होती है। ओके, इसके टॉपिक का और एक तरीका निकालते हैं। जैसे अभी अपना एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ऐसे वाला, ऐसे अब आपने अच्छे से डिस्कशन करना है यहाँ पे, और उसको बस शब्दों में लिखना है, नॉर्मल जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए। तो ये काफी बढ़िया रहेगा। सपना, आपने बहुत अच्छा बोला है। अब सी लास्ट टाइम जो था और इस टाइम पे था, हमें डिफरेंस नजर आया। सी कितना कंसिस्टेंट था, बिना किसी हेजिटेशन के, बहुत फ्लो में आपने बोला है। दिस इज वेरी गुड। पॉइंट्स भी आपके बहुत अच्छे थे। दिस इज रियली रियली गुड, वेरी गुड सपना, वेरी नाइस, है ना। इसको भी और इवॉल्व करते हैं ना, और इवॉल्व करते हैं, और मेरे को अभी फीडबैक भी देते जाओ। अभी हम क्लासेस में भी अभी और इवॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स वन बैच में भी और मेंस बैच में भी, है ना। गिव सजेशंस, यस। हाय रेखा, हाय रेखा। Hi, sir. Good हाय, afternoon. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, यस, all. गुड आफ्टरनून, यस। Today, my topic is रेखा इज ऑल्सो history. फ्रॉम साउथ, है ना। Yes, sir. यस यस, From Karnataka. कर्नाटका, क्या बात है। यस, Today, my topic is history is a series of victories won by the scientific man over the romantic man. वेरी गुड। History is record. History is a record of human events that have occurred over time. It is a story of how human beings have evolved, interacted, and impacted the world around them. The scientific man is a man who has desired to understand the world through objective analysis and rational thinking. This approach has led to numerous discoveries and advancements in areas such as physics, biology, and medicine. For example, Galileo Galilei's discovery of law of motion and his demonstration of the heliocentric model of the universe revolutionized our understanding of the cosmos. Romantic approach, on the other hand, is driven by intuition, emotion, and personal experience. This perspective is often associated with the arts, particularly literature and music. For example, William Wordsworth's romantic poems such as I Wandered Lonely as a Cloud evokes feeling of solitude and wonder in the reader. Key victories of the scientific man over the romantic man are, first and foremost thing, enlightenment. The period of intellectual and cultural ferment which took the place in Europe in the 17th and 18th centuries was characterized by a renewed emphasis on reason, science, and progress. For example, the works of philosophers such as John Locke, Immanuel Kant, scientific discoveries of Galileo, Isaac Newton, Raja Ram Mohan Roy's rationalistic ideas, and others helped to change the way we think about the natural world today. Another victory for the scientific man was the Industrial Revolution. This brought about a new era of economic growth and prosperity, as well as significant social and political changes. For example, growth of urbanization and the rise of middle class helped to break down traditional and social structure. In addition to this, rise of psychology is a discipline in the late 19th and early 20th century marked a major victory for the scientific man, as it sought to understand the working of human mind through empirical evidence and scientific experiment. For example, psychologists such as Sigmund Freud and Carl Jung helped to explain the unconscious process that drive human behavior. Yes. Another instance is development of computer technology and AI. This field of study, which emerged in the mid-20th century, brought about a new era of automation and revolutionized the way we live, work, interact with each other. Overall, even in our constitution also mentioned rationalistic ideas in Article 51AH, that is to develop scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. In contrast to this, romantic perspective continues to play an important role in our understanding of the world, and it provides a valuable counterbalance to the scientific perspective. For example, environmental movement has emerged as a response to the technological and industrial advances of the scientific man. Ultimately, both perspectives are necessary because those are two faces of the same coin, which is inevitable for the complete understanding of the world and for our continued progress as a species. Thank you, sir.
क्या बात है, वंडरफुल। फ्लो भी बहुत अच्छा है, दिस जो टोन में आपने बात किया ये भी वंडरफुल वंडरफुल। एंड द पॉइंट्स एग्जांपल्स आपने देखे थे, कितने अच्छे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सारे। जैसे हमने हिस्टोरिकल एग्जांपल्स दिए, लॉज ऑफ मोशन, और सारी चीजों को बहुत एनालिटिकल वे में बताया। एनालिटिकल, हम साइंटिफिक भी हैं बट साथ ही साथ एक रोमांटिसिज्म भी होना चाहिए, इमेजिनेशन भी होना चाहिए। दिस मेक्स अस ह्यूमन, अदरवाइज हम तो मशीन बन जाएंगे। और ये कंप्यूटर और एआई का एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है कि इसमें भी हमें ह्यूमनिज्म होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए। यस Thank you, यस sir. Thank you यस, all. वेरी गुड रेखा, वेरी वेल, वेरी नाइस। यस, हाय हाय पवित्रा। Hello, sir. So am I audible? Yes, you are audible. Yes. Hello, everyone. Yes. My topic is history is a series of victories won by the scientific man over a romantic man. Yes. History is the study of changes that occur over time, the issues, the conflicts of that time. There is no conflict that has had more clashes than science and romance, or simply logic and emotion. When Darwin proposed the theory of evolution, it went against the biblical theory of the church. And this must have made his life difficult, as most people did not believe him. Yet, history remembers him as the father of evolution theory. Yes. He remembers him victorious over the romanticized emotions of the church. Yes. Let's look at a scientific man very close to home. Chanakya, ancient Indian polymath, a teacher, strategist, and economist. History remembers him as a great kingmaker who made a common boy into the king of mighty modern empire through sheer brains. His political treatise, Arthashastra, remains to be relevant even today. But does this make romanticism obsolete or unimportant? No. We should remember that although historical battles are won by the scientific mind, but it is written and preserved by the romantic man. A romantic man adds culture, his personal experience, and to the historical narrative. We know in the Battle of Tarain, the Rajput king Prithviraj Chauhan lost to Turkish tribes led by Muhammad Ghori. Yet, चार हाथ 24 गज अंगुलश प्रमाण ताऊ ऊपर सुल्तान है बच्चों को जहां. These lines by Chandra Bardai have immortalized the Rajput king as a historical hero and is still remembered today. It is also important to remember that science without emotion has utter devastating ramifications. The bombings of Nagasaki and Hiroshima haunts the mind of people even today. And no matter how advanced it was for science, it is a dark, blood-soaked page in the history of mankind. To conclude, I would say that the answer is balance. The scientific man and the romantic man have a sort of symbiotic relationship, not one of opposition, but quiet complementing. History is a series of victories of scientific man over the romantic man, but at the same time, the romantic sentiment is what makes this victory worthwhile. Thank you. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा से आपने बोला। और जो टॉपिक था जैसे हिस्ट्री, साइंटिफिक, रोमांटिक, इसको आपने बहुत अच्छे से बैक किया। आर्ग्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं और एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे हैं। और पवित्र, आपका जो स्टाइल है ना, बोलने का स्टाइल है, ये भी बहुत इफेक्टिव है। दिस इज रियली गुड, वेरी गुड, यूनिक स्टाइल है। दिस इज रियली नाइस, बहुत बैलेंस्ड है। जैसे आपने कुछ कीवर्ड्स यूज किए, सिम्बायोटिक, कॉम्प्लीमेंट्री है, हिस्टोरिकल, आपने नैरेटिव बताया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, वेरी नाइस। सी, देखो सब कितना अच्छे से बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से सारे पॉइंट्स बता रहे हैं। दिस इज व्हाट वी शुड डू, दिस इज व्हाट वी शुड डू, और इसको हमें और फर्दर और इम्प्रूव भी करना है। ओके, हाय हाय हरजिंदर, हाय हाय हरजिंदर, आर यू देयर? Yes, sir. Good afternoon, Yes. sir. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Good afternoon, sir. Yes, Yes. sir. My topic is forest are the best case studies for economic excellence. In this Yes. topic, we will discuss about the characteristics and qualities of forest
which we should have to implement in the economy. Like in the forest, there are so many qualities like natural ecosystem. In the forest, there are a natural ecosystem like both living and non-living organisms are there. Living like different species, trees, etc., and non-living include water, air, sunlight, etc. We need to apply the same in the economy, like there should be have an ecosystem in which all type of organization, institution, company, sector like both public and private should be work for the economy. And second is the resilience. In the forest, there are so many calamities like floods, droughts, forest fire, etc. But forest can survive. So in the economy, we should have to be like such type of qualities like in the COVID-19 is a calamity, and we should have to be resilient for this type of calamity. We all know that this is not the first and this is not the last pandemic. And next is a diversity. Diversity in forest make the forest healthy, productive, and sustainable. For example, in the forest, there are so many big or small species, and they depend on one another. Like we know food chain and food web, etc. And same as in the economy, there should be a MSME, big industries, electrical industries, and heavy industries, and they should work for each other and adopting continuously the next qualities of forest. Forest is adapting herself with the climate condition. Species are also adapting herself like in the desert. There are we see it from like bushes, etc. And in the economy, we should have to be adapted according to the condition. Like we have reformed the economy in 1991, LPG reforms, and invasive species. Invasive species are mostly harmful to the domestic ecosystem. They collapse the ecosystem. Like foreign companies are harmful for the domestic economy if they work without laws, without regulations. MNC usually side out the MSME of the domestic country. Dumping is also such type of example of this. And we cannot force the species of the species of any type to live in the different type of climate or in the different type of forest. It means that some species are particularly for the equatorial rainforest like rubber, palm oil, bamboo, etc. And species like penguin live in the cold desert, and snow leopards live in the snowy areas. We have to learn from the forest that agriculture crops should be according to the soil. Like cotton is grown in black soil and rice grown in the well-drained water. So agriculture crops should be according to the type of and favorable climatic conditions. And mangroves forest act as a buffer zone in between territorial and aquatic ecosystem. In the water, there are so many disastrous currents developed like cyclone, mangrove, and mangrove protect the territorial ecosystem. In the economy, buffer stock, foreign exchange play like the mangroves. And in between the international calamities during the COVID-19 and now in Ukraine crisis, we see the our foreign exchange play an important role to maintain the supply chain and maintain the demand supply of the economy. And according to Mahatma Gandhi, there is everything in the world for needs, not for the greeds. It is exactly right because exploiting beyond the regeneration capacity collapses the ecosystem. If in the forest some species dominate the all the natural ecosystem collapse. In the economy, if the overuse of natural resources like coal, natural gas, etc., then it will backfire in the future because future generation will feel the shortage of natural resources. And we know the technology from the forest like Japanese learned the idea from kingfisher and they made the bullet train. It is a technology also which we learn from the forest. So in the conclusion, we can say that forests are the best case studies for the economic excellence. We learned from so many things from the forest which are the we can implement in the economy.
Forest also plays an important role directly, like they provide raw material, control the pollution, and control the floods, etc. Thank you, sir. वेरी गुड, कितना बढ़िया बोला है, दिस इज रियली गुड, और कितने अच्छे से फ्लो में बोला है ना। देखो कंटेंट हमारा बहुत अच्छा है, बट कई बार हमें बहुत ज्यादा ओवरडू एग्जांपल्स भी नहीं करना है, हमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स पे ज्यादा एम्फेसिस देना है। जैसे जो आर्ग्यूमेंट्स आपने टुवर्ड्स द एंड बोला था ना, टेक्नोलॉजी जापान और फॉरेस्ट हमें रिसोर्सेज भी देता है, ये बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, है ना। सो दिस इज रियली गुड, कंटेंट वाइज भी बहुत अच्छा है, केस स्टडीज का एग्जांपल्स भी आपने बहुत अच्छे से दिए, और दिस जो आर्ग्यूमेंट्स थे ये थोड़ा और हम आर्ग्यूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, है ना, ऐड कर सकते हैं, यस। और जो हमारा यूनिक स्टाइल है ना, उसी यूनिक स्टाइल को कंटिन्यू करना है, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छा बोलते हो। हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब थे ना, मनमोहन सिंह साहब भी जब रेड फोर्ट से स्पीच देना होता था, तो वो बोलते थे स्कूल में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। सो इट इज परफेक्टली ओके, दिस इज परफेक्टली ओके, दिस इज परफेक्टली ओके। जो हमारा टोन है, जिस तरीके से हम बात करते हैं, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल चलेगा, बहुत अच्छा है आपका, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड, ओके, यस यस यस, ऑलराइट, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय शागुफ्ता। Hello, sir. हेलो, हाय शागुफ्ता। Hello, sir. Am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल, यस Okay, sir. यस Okay, sir. यस क्या शागुफ्ता। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा वो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर। वंस अगेन, ओके सर, ओके सर। यस क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। क्या बात है, वेरी गुड, यस यस शागुफ्ता। Yes, sir. So the topic for my today's speech is a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. A ship is made for one purpose, but it has two choices: whether to stay at the harbor or to sail through the vast oceans, facing storms, strong winds, tornadoes, tsunamis, and with the fear of sinking down and of uncertainty whether it will reach its destination or not. Same like that, we human beings are not made of flesh and bones, but rather of goals and dreams with one purpose. We have the option to sit down, do nothing, or to start the journey of oneself towards that purpose. But the journey is difficult, filled of uncertainties, fears, and doubtful mind. But it is said, luck favors the brave. If one person is towards one mission, even if there is failure, there is equal chances of success. Life can lock you down, but the only difference at this time will be that you are filled with courage that what if you succeed? The quote above is a reminder of one's duty. But what is one's duty? One's duty is to walk the path to reach the goal that we set for ourselves and to the mankind. But that path will remain unknown and unwalked if we don't start our journey. Siddhartha would have not been known as Gautam Buddha if he would have not left his palace and would have not left his comforts. Mahatma Gandhi would have not been known as the father of our nation if he would have not left South Africa. There are several many examples, be it B.R. Ambedkar, Nelson Mandela, and our freedom fighters. All these personalities are of proof that one just has to walk the path, start the journey, because that gives you the courage to sail through, to fight our challenges and adversities. History is a proof that those who are true with their duties are the ones who have made and got meaning to their life and added definition to the mankind. And at the end, I must say that as a country, we are also facing challenges like poverty, unemployment, inflation, opportunities and rights. Hence, as a duty towards our people, government systems, and we ourselves has to sell our journey towards making India great again. Thank you, everyone. वेरी गुड शागुफ्ता, टू द पॉइंट, बहुत अच्छे से आपने बात कहा, और अगेन वॉइस में जो वजन है, पैशन है, वो बहुत अच्छा है, जिस मोटिवेशन और जिस मतलब फियर्स जो वॉइस होता है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड शागुफ्ता, और आप बहुत अच्छा बोलते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अच्छे से कंटेंट भी हमने कवर किया है, प्रिसीजन एंड टू द पॉइंट के साथ किया है, दिस इज वेरी गुड। अब इसको और हमें फर्दर प्रैक्टिस रिफाइन और ज्यादा रिफाइन करना है, ओके,
दिस इज वेरी नाइस शब्द। और इस पे एक ऐसे भी लिखा है ना, अभी तो हाफ ऑफ द जॉब इज डन, अभी हमने केवल स्पीच तैयार किया है, अभी इस पे एक ऐसे लिख के भी हमें सबमिट करना है, ऐसे भी लिखना है। ओके, यस Okay, sir. यस, वेरी गुड शब्द। हाय शशि। हेलो सर। हेलो, हाय शशि। यस, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। एक्चुअली ये गलती से हैंड उस पे क्लिक हो गया था मेरा। कोई बात नहीं, अब इम्प्रॉम्प्टू आप बोल दीजिए। यस यस My Yes, topic is yes. poets are the unacknowledged legislator of the world. Yes. Okay. Keep my anger from becoming meanness. Sorry. Yes, please continue. Keep my sorrow from collapsing into self-pity. Yes. Keep my heart soft enough to keep breaking. Yes. Keep my anger turned forward, justice, not cruelty. Yes. Remind me that all of this, every bit of it, is for love. Yes. Keep me fiercely kind. Yes. If you want to connect, motivate, and encourage someone or the whole world, poem and songs are the best way. All revolutionary activities are encouraged with emotional poems and songs. With this, the souls are connected automatically, and the outcome you can see. For example, India's freedom struggle, all the revolutions around the world. The thinkers, writers, and singers were know the real power of their skills. So Yes. they motivate the youth, the country with their thoughts. For example, Yes. Swami Vivekanand, Ravindranath Tagore, Mhm. Bankim Chandra Chatterjee, Yes. Karl Marx, Yes. etc. Yes. They lead the whole world without any crown, and everyone follow them without any question, because they touch their souls, not the pockets. Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. Thank you. Very good. ये लास्ट लाइन फिर से बताइए। इमोशंस लास्ट में Poetry जो is आपने when बोला ना, an यस, yes, इमोशंस। sir. Poetry is when an emotion has found its thought and the thought has found words. वेरी गुड। देखिए कितना अच्छे से हमने इम्प्रॉम्प्टू बोला। दिस इज रियली गुड। ऐसा ही स्किल हमें सीखना है। ये स्किल हमें राइटिंग में भी रिफ्लेक्ट होना है और रीड दिस स्पीकिंग में भी रिफ्लेक्ट होना है। शशि, आप बहुत अच्छा बोलते हो, वॉइस में बहुत ग्रेविटी है और बहुत ठहराव है। दिस इज रियली नाइस। वेरी गुड शशि। First time था sir, I was hesitated a lot. नहीं, आपने बहुत अच्छा बोला है। दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस। Thank you, sir. हाय शुभांगी। Shubhangi, are you there? Hi. Yes, sir. Yes. Hi, Shubhangi. Hello. Hi, sir. Yes. Please continue. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. Sir, my topic is जो आपका सबका favorite topic है. Sheep. A sheep is safe in harbor, but that is not what it is for. Yes. And I think that resonate with all of us. And I think secretly some of us have our stories of being safe and playing safe. Yes. Lately, I have been acutely conscious of the fact that if you can think and not make the thought your aim, no comfort zone is safe zone, and ship may not be always safe at the shore. And in an attempt to do something that matters, and I'm getting beyond the comfort zone, being vulnerable,
And however, I just want to hide. I shouldn't hide under the question of what if. Yes. In personal development, the harbor represents the comfort zone where we feel safe and secured. Although it may be tempting to stay in the comfort zone, true success lies in taking risks and venturing outside the comfort zone. To reach a part, we must set sail, not tie at the anchor, sail, not drift. These are the lines by Franklin D. Roosevelt. But the sea is harsh, and it is not wonderful and joyous. Yes. And but I think it's more magical. I think, and I want to thank you, sir. I never thought I will be attending a class and learning on the platform where whole nation will be representing. And now I'm happy that I'm attending. And similarly, nation development, India is celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, and to commemorate the glorious history of people, culture, and achievements. After some 200 years of British rule, the post-independent India, the job of nation was building, was the sorry sir, the job of nation building was now in our hands, and the biggest challenge was how the resources of the nation should be put to use. The challenge and the dilemma was whether to focus on stability, which means the likelihood to fall behind other nations that are willing to take risks and pursue new opportunities, or the to venture beyond the harbor to achieve its full potential. The India, fueled by spirit of Atmanirbhar Bharat to shape the destiny of motherland, navigating through the inward-looking policies to liberalization, privatization, globalization, to investing in new technology, expanding the exports, attracting foreign investments, adopting lifestyle for environment, pursuing digital security, biological and out space security, facilitate the political settlement when it comes to the political and regional hotspot issues. Yes. Through people's movement, through collaboration and campaigns, and outreaching across the India and outwards, we have been achieving significant level of growth and development. The central question was revolving around unity or split, peace or conflict, cooperation or confrontation. A ship exists to play the sea, to split the waves, to brave the weather, to go to distinct ports, whether to trade goods, import locals, etc. However, it is important to note that taking risks doesn't mean jumping into the unknown without proper preparation. Rather, it involves calculated approach. As India's campaign aligned with the Panch Pran, the goal of developed India, removal of the colonial mindset, taking pride in our root, the sense of duty to citizens, and inculcating the feeling of unity. India is willing to venture beyond the harbor by taking risks and pursuing new opportunities and evolving, growing, and succeeding. Thus, India and I both are willing to step aside, embrace uncertainty, want to achieve the full potential, the experience, learn new, reach new level. Let's see what is out there and fulfill our purpose and find new passions along the way and experience the sense of adventure and magic. Thank you, sir. It is so magical. It is so magical. Magical. Very good, Shubhangi. कितना बढ़िया बोला है आपने. This is so nice. Very nice. इसमें Last बहुत time was very dull. I think this time I did well. नहीं आपने बहुत अच्छा बोला है. आपका जो टॉपिक के डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था वो भी एक्सप्लेन किया, मैसेजिंग भी एक्सप्लेन किया और बैलेंस भी बनाया कि ऐसा नहीं है कि हम केवल रिस्क टेकिंग एटीट्यूड को एनकरेज कर रहे हैं. रिस्क टेकिंग एटीट्यूड भी होना चाहिए और केयरफुल एटीट्यूड भी होना चाहिए. वी हैव टू हैव अ मिक्स ऑफ बोथ. यस, वेरी नाइस. यस, Thank you, sir. यस. Thank you, everyone. Hi Princey. Hi Princey. Hello, sir. Hello. Am I audible? Yes Princey. Okay. NCC cadet आ गया है. Yes. Good Yes, afternoon, Princey. one and Good all afternoon. present here. Yes. My topic for the today discussion is
forests are the best case study for economic excellence. Yes. Forests are considered as best case study for economic excellence because forests symbolically represent the economic excellence. Forest, forest means these are natural, organic, represent interrelationship with environment, survival of the fittest, and efficiency. If we want economic excellence, all the above attributes must include in economic system. A good economic system represent robust supply chain, interdependent on various stakeholders, competition in markets. The forests and the economic system prevalent in contemporary society are based on a hierarchical and co-dependent structure. For instance, food chain in a forest goes as follows. Grass is the food of deer and deer is the food of tiger. If there is a scarcity of grass, can lead to starvation for deer and further creating a scarcity of food for tiger. In similar way, in economy, if supply chain of good and product is disrupted, it leads, it leads to inflation in market. In addition to the plants and animals which are not adapted themselves in the changing climate will not be survive in the upcoming time. I like this. In economic, if the competitor are not change themselves with the time and adopt themselves in the changing time will left out from the competition. So on this very manner, we can say forest is the best case study for economic excellence. Thank you. वेरी गुड। देखो अभी प्रिंसी का भी अप्रोच कितना अच्छा था, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फॉरेस्ट, इकोनॉमी, केस स्टडी, केवल 3 ही वर्ड्स पे हमने बात की है, फॉरेस्ट, इकोनॉमी और केस स्टडी। केस स्टडी मतलब एग्जांपल्स, फॉरेस्ट फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट इकोनॉमी से कैसे कनेक्टेड है। तो ऐसे में स्पीच में ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप टॉपिक से बहुत ज्यादा डाइवर्ज नहीं हो, विद इन द टॉपिक रहने की जरूरत है। ओके प्रिंसी, आपने बहुत अच्छे से बात किया और बहुत अच्छे से इसको लिखना भी है अब ऐसे के फॉर्मेट में। ओके वेरी नाइस। ओके सर। वेरी नाइस। देखो हम ये कल्चर डेवलप नहीं करते हैं कि बस सब अपना नंबर आया स्पीक किया फिर निकल गए, फिर जब अपना नंबर आया फिर स्पीक किया फिर निकल गए। नो, हमें एक पैटर्न करना है, तभी तो क्लासरूम का फायदा होगा। हमें सबका अटेंटिव भी रहना है, सबका सुनना है, फीडबैक देना है। अदरवाइज ये थोड़ा डिसरेस्पेक्टफुल भी लगता है ना, डिसरेस्पेक्टफुल भी लगता है कि ऐसा नहीं है ना। एंड एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी इज इक्वल। सो अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है देन उस केस में इट्स ओके, अदरवाइज हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। ओके और अच्छे से सबका सुनेंगे। ओके आपको लर्निंग होगा। जैसे मैं वीडियोस बताता हूँ ना, बुक्स सबके पास है, पर क्या वो बुक्स पढ़ते हैं? हम नहीं पढ़ते। आप सबको सुनो, आपको बहुत अच्छे नए नए पॉइंट्स मिलेंगे। हर किसी से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और ग्लास फुल एटीट्यूड नहीं रखना है कि आप बहुत अच्छे हो तो अब आप किसी से सीखोगे नहीं, ऐसा नहीं। There are people who are also really good, equally good, even better than you. So you should learn from them. Learn from them. Okay? Yes. So अभी ये कल्चर नहीं करना है कि हमारा हो गया तो अब हम चले जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, मेरी बैटिंग हो गई अब मैं बैट लेके घर जा रहा हूँ, मेरे को अब नहीं करनी फील्डिंग, ऐसा नहीं। ओके यस ऑलराइट, जल्दी जल्दी क्विक करते हैं, विद इन 15-20 मिनट्स पूरा हो जाएगा अपना। जस्ट फॉलो दिस। हाय हाय नंदिनी, हाय नंदिनी। यस क्विक क्विक क्विक। हेलो नंदिनी। Hello, good morning. Sorry, good afternoon, sir. Yes, good afternoon, good afternoon. Yes, Nandini. Nandini, Sumedha, Asha, Tarun, Riya, Supriya. Yes. Nandini, quick. So can I start? Yes, please start. Okay, sir. So my topic is a seat in harbor is safe, but that is not what a seat is for. Yes. So I start. The biggest risk a person can take is to do nothing. Yes. Every person's life is like a vessel that carries them through the ups and downs of life with a few hopes or a sense of hopelessness. Because salvation is the ultimate goal of human existence, much as how a ship sinks to reach its shoreline.
Salvation is the objective of life. Yes. A struggle of prince, for example, if we talk about yeah, Buddha, struggle of Prince Siddhartha with himself makes the Bhagwan Buddha. Risk, danger, and a struggle are the imperceivable part of life. A struggle can sometimes seem like a hell and get worse, but we should not lose hope and keep exploring. A struggle is the ability to recover from hardship and learn from the experience. Yes. For example, our nation got freedom from the rule of the British Empire in 1947. The tremendous achievement is the result of struggle and hardship faced by our freedom fighters. Struggle culminates in in big success, and a struggle in itself is a big success. So I would like to conclude this speech. Life brings many challenges. Change is hard. The first step is always the hard step. But if you have it in you to take out the courage and proceed forward, success will follow and help will come from many directions. क्या बात है, वेरी नाइस. Thank you, sir. यस सर, दिस इज रियली गुड, रियली गुड. जो लास्ट का जो कोट है वो एसेंस है. पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता है, सेकंड स्टेप थोड़ा और इजी होता है, थर्ड और इजी होता है, फिर हम कंफर्ट में वहां पे बहुत इजीली कंटिन्यू कर पाते हैं. दिस इज रियली गुड. और अगर हम किसी चीज पे बहुत पैशनेटली वर्क करते हैं ना, यूनिवर्स कॉन्स्पायर करता है और उसकी हमें हेल्प मिलती है. वो है ना, अगर शिद्दत से किसी को चाहते हैं तो पूरा कायनात उसको आपको हेल्प करने में लग जाता है. दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट. वेरी नाइस. तो ये अच्छे से, मेरा आवाज अच्छा था तो बहुत अच्छा था आवाज. दिस इज रियली गुड. कितना बढ़िया बोला आपने, कॉन्फिडेंस के साथ. नो हेजिटेशन भी नहीं हो रहा था लास्ट क्लास में, आप थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे, इस बार हेजिटेशन भी नहीं था. नो, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड नंदिनी. और आप लिखते भी बहुत अच्छा हो, तो इस पे अब ऐसे भी लिखना है. ओके, थैंक यू सर. यस, वेरी नाइस. हाय हाय सुमेधा. हाय सुमेधा, आर यू देयर? हेलो. भाई ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ से माइक ऑन है. अब अपना, आप उसे लैपटॉप पे देख रहे हो ना, उसमें परमिशन ग्रांट करो. उधर एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे आता है पेज में ऊपर एक आता है एक्सेस कैमरा एंड माइक्रोफोन. तो कैमरा की जरूरत नहीं है, माइक्रोफोन ऑन कर दो. यस 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 सुमेधा. Am I audible? Yes, you are audible. You are audible. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Sir, I'll be speaking on the topic forests are the best case studies for economic excellence. Yes. It won't be wrong to say that the entire human civilization can be rooted back to forest. Forests perform vital functions, be it economic or social, from providing oxygen, shelter, water, nourishment, fuel, to even serving as a genetic reserve. Yes. One cannot stress enough about the economic importance of forests and how they have been supporting national development and growth through ages. Looking back at history, we see why and how European powers like British and French could prosper at the expense of other nations. They strategically and successfully could exploit the natural resources across continents like Asia and Africa. In India, the British East India Company expanded its territory by targeting the rich forest for timber, building infrastructure, railway, and ships. Today, governments all over are realizing the importance of forest and the economic value. In India, the Ministry of Tribal Affairs is providing marketing of minor forest produce through TriFed to augment livelihood of tribals. Ministry of Environment and Climate Change is promoting ecotourism through jungle safaris, a great way for people to appreciate and respect ecology. The COVID pandemic showcased the therapeutic properties of Ayurvedic plants, even recognized by the World Health Organization. India can use its expertise in Ayurveda and discount this opportunity. The concerns today are myopic policies on ecology,
inconsiderate felling of trees and deforestation, and diversion of forest tract for reckless economic development. Yes. Given the perils of 21st century, the humankind is facing, from climate change, global warming to sixth mass extinction, it's even more crucial to secure our forest. Mitigating efforts of forest just can't be ignored. The pressing priority today is judicious use of our endowments, our forest, keeping in mind the net zero targets and sustainable development. The onus now is on individual, communities, and governments to stand up for humankind and, most importantly, all life forms. It has to be a fine balance between ecology and economics because, in the end, it's not just about GDP numbers, but it's about survival. Very good. Thank you. देखो सुमेधा की जो बात करने का तरीका है इसमें कितना ठहराव है। ठहराव मतलब मैच्योरिटी के साथ बहुत सूदिंग और काम वे में सारी बातें बताई। दिस इज ऑल्सो रियली नाइस, दिस इज रियली वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज गुड। सेकेंड जो पॉइंट्स भी जो बताए थे वो भी बहुत अच्छे थे। सुमेधा आप कुछ और केस स्टडीज सोच सकते हो, केस स्टडीज जिसमें फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स ने बहुत हेल्प किया, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स ने ट्रांसफॉर्म कर दिया वहां की इकोनॉमी को या फिर गवर्नमेंट ऐसा। यस, है ना, ऐसा ऐसा कुछ केस स्टडी का। Like the civilization, how civilization grew. I wanted to use example of the Amazon forest near Yes. Amazon, or Yes. even the Narmada Bhimbetka, Yes. because civilization Yes. arose there. Yes. Things like that. यस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से हम कैसे कर रहे हैं, जिसे आपने ट्राइफेड का एग्जांपल दिया था, Yes, sir. है ना, जन जन मेला लगता है बहुत सारा जिसमें ट्राइबल्स, हनी हुआ, बैम्बू हुआ, बहुत सारे Yes, sir. प्रोडक्ट्स हैं। जीआई टैग हमें उन्हें दे रहे हैं ताकि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी उनकी बढ़े, लाइक Yes, दैट। sir. यस, है ना, दिस इज Yes, sir. रियली And, गुड। exporting the minor forest produced through MSMEs, things like that. MSME, yes, So very nice. I could have added a economic angle there. यस यस यस, सो दिस इज रियली नाइस। अब इस पे एक हमें ऐसे भी तैयार करना है ना, आपने एक ऐसे लिखा फिर दूसरा ऐसे नहीं आया है, तो अभी So इस I am ऐसे thinking को so much प्रिपेयर करना resistance है। over. यस यस, ओके, Thank you, sir. सो इस ऐसे को प्रिपेयर करना है हमें। ऑलराइट, यस यस। हाय, तरुण का नंबर कौन सा था? सुमेधा के बाद था ना तरुण का नंबर? आशा के बाद था तरुण? आशा के बाद था आई थिंक। यस, हाय आशा, यस आशा, कंटिन्यू। Hello, sir. Good afternoon. हेलो, गुड आफ्टरनून। यस I am properly audible. यस, यू आर ऑडिबल, यू आर ऑडिबल। Okay, sir. Yes, Forests are yes, the Asha. best in studies for economic Yes, excellence. Topic. yes, A yes, tribal family of Onge tribe living in the forest of Andaman and Nicobar. The forest is their home. The Andaman and Nicobar forest is an evergreen forest. It has a wide variety of vegetation, flora, and fauna. The Onge tribal people fully dependent on forest and on food provided by nature. They traditionally mean eating wild leafy vegetables, fishes, crabs, wild fruit, etc. They also hunt animals for their living. They do agriculture, forestry, and fishing. In their case, if the forest is in good condition, so they as well. It is best suited here. Forests are the best case studies for economics excellence. But the economic excellence of one is becoming a hurdle in economic development of others. Example, the Onge tribe living in Andaman and Nicobar for so long, it is their home where they live freely. However, the Indian government has planned a mega infrastructure project for Andaman and Nicobar for making it a major tourist attraction. They have to clear the forest for this purpose. As a result, it would impact tribes of Andaman and Nicobar, and this development become obstacle for the tribes. Forests have their own significance and value. Forests are the only source of oxygen for the earth. It acts as a carbon sink. It also helps in binding the roots and prevent the soil erosion. Binding capacity of the soil support in flood control. Minor forests produce an important source of livelihood for tribal people. The Ministry of Tribal Affairs declared the minor forest produce and administer Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, which is TriFed. Its aim is to make tribal people economically independent.
Forest tourism is also an important source of income for economy. People would get interact with the local plants and animals' life and know about their natural habitat. Now coming to the quote of Mahatma Gandhi. The world has enough for everyone's need, but not for everyone's greed. Forests are undoubtedly reserves of resources which fulfills everyone's need, but the extent of greed of human has increased beyond limits. Wrongdoers, for their economic benefit, harm the heritage of forest. They illegally sell the valuable herbs, trees by doing deforestation. One such example is rent senders, which is endemic to Eastern Ghats, are illegally transported to China in huge amount. Furthermore, dam construction is a huge expenditure for government, but it also serves the utility, facilitate multiple uses of water. It required huge capital to build a dam, and after that, there is no assurance that it would be a success. Because a dam is built on a huge cost, it built on a cost of tribal people's displacement, wildlife displacement, on the huge expenditure of government, and works properly only for approx 40 to 50 years. After that, siltation and sedimentation cause lower amount of water capacity, which at times not even fulfill the need of a state. It became white elephant on economy. Indeed, dam construction captured the forest area but enriches the area with economic activities. Forests have life and it also give life to the enormous range of species, including human beings. In fact, it is also proved by Jagdish Chandra Bose that plants have life. Forest is the natural home for tribes. Forest gave them lives and reason to sustain. Almost all tribes worship nature. They know the ultimate reality is nature only, which gave birth to them and resources for livelihood. They use the resources for protecting the nature. They should protect our forest and nature by contributing individually. We should not become blind for economic interest, rather focus on economic excellence of country by minimizing the destruction of forest. In conclusion, forests are the best case studies for economic excellence. They provide shelter to tribes and wildlife, protect the shorelines of coast, produce minor forest products, make tribals independent with the minor forest produce. They attract the tourists for embracing its beauty. For utilizing forest economically, we need to stop doing illegal activities and promote awareness about the importance of forest in economic development via legal activities. Thank you, sir. ब्यूटीफुल। आशा, आप बहुत अच्छा बोलते हो और जिस तरीके से आपने पॉइंट्स बताए ये भी अच्छे। देखो यहाँ बहुत अच्छा था कि हमें इकोनॉमिक केस स्टडीज बताना था। फॉरेस्ट इकोनॉमी, इकोनॉमिक कितने टाइप्स के हो सकता है। हम प्रोडक्शन इकोनॉमी हो रहा है, टूरिज्म इकोनॉमी हो रहा है ना, मेडिकल इकोनॉमी हो रहा है, ऐसे करके रॉ मटेरियल का इकोनॉमी है। ये बहुत अच्छे से आशा ने कवर किया। दिस इज रियली नाइस। और साथ ही साथ इसमें एम्प्लॉयमेंट, ट्राइफेड, जो चैलेंजेस है उनको भी आइडेंटिफाई किया। जैसे दूसरा अच्छा एग्जांपल था डैम्स का, कि ये जो डैम्स बनते हैं, मतलब हमारा फॉरेस्ट में हमने कुछ डैम बनाए हैं तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट वहां से कट होते हैं, डूबते हैं या फिर उनको काटा जाता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। उसकी क्या कॉस्ट होती है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। वेरी गुड, दिस इज रियली गुड। जेसी बोस वाज आल्सो रियली नाइस। वेरी गुड आशा, दिस इज रियली रियली गुड। यस, वेरी नाइस। आपके आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छे होते हैं। रिज्यूम इट। यस, Okay, ओके। sir. Thank you, sir. यस, आई थिंक तरुण आप पहले ऊपर थे ना, ब्रेक के पहले। यू वांट टू कंटिन्यू तरुण? यस, आई थिंक आशा के बाद तरुण था, फिर वो तरुण भी ब्रेक के लिए गया था, इसलिए फिर नीचे हो गया। फिर तरुण, यू वांट टू कंटिन्यू? 1 2 3, क्विक क्विक क्विक। यस, जल्दी, क्विक, कंटिन्यू। रिया, इसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं। तरुण, यस। Good afternoon, everyone. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Tarun, you are audible. Okay, so good afternoon, everyone. I am Tarun Kumar Dwivedi, and I hope that you all are doing well and sound. So the topic of my today's essay is poets are the unacknowledged legislators of the world. In his seminal work, A Defense of Poetry, Percy by Shelley once proclaimed, poets are the unacknowledged legislators of the world. This thought-provoking statement implies that poetry and literature wield significant influence on society,
comparable to the lawmakers who govern nations. So, by this essay, we'll explore the profound impact poets have on shaping minds, challenging norms, and inspiring social change, all while remaining often underappreciated. Also, I'll be narrating this essay in the Tabaka format, that is, point wise. So, the first point is the power of words. Poetry possesses a unique ability to transcend the boundaries of time and space, speaking directly to the human soul. The emotions and ideas expressed in poetic verses have the capacity to touch and transform individuals on a deeply personal level. Words carefully chosen and arranged carry the weight of profound meanings, sparking contemplation and introspection. Moreover, poets often act as societal mirrors, reflecting the prevailing sentiments, dreams, and struggles of their time. Their works, their works serve as both a critique and celebration of human experience, shedding light on the complexities of life. The poet's language, rich in symbolism and metaphor, evokes emotions and captures the essence of shared experiences, enabling people to connect and empathize across cultures and generations. Challenging the status quo, poets have frequently been at the forefront of social movements, bravely challenging established norms and injustices. By expressing radical ideas and advocating for change, they expose the flaws in the existing systems and encourage collective re-evaluation. For instance, during the Romantic era, poets like William Wordsworth and Samuel Taylor championed nature and individualism, challenging the dehumanizing effects of the Industrial Revolution. Similarly, during the Civil Rights Movement in the United States of America, poets like Langston Hughes and Maya Angelou used their verses to articulate the plight of African Americans and demand equality. On a similar way, उपन्यास और कहानी के अलावा कवियों ने अपनी कविता से लोगों में देश प्रेम की ऐसी अलग जगाई कि लोग घरों से बाहर निकल आए और क्रांतिकारी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया. And this is quite evident from the fact that each and every revolutionary was once an author or a poet. Poet also helps in inspiring imagination and creativity. Poetry serves as a wellspring of creativity, inspiring not only future poets but also artists, musicians, and thinkers across various disciplines. Here, I'm talking about the intellectuals, not the generalists. The beauty of poetic expression lies in its openness to interpretation, allowing individuals to find their own meanings and derive inspiration from the world. The act of reading or hearing poetry can awaken dormant creativity within people and kindle a desire for self-expression. So, like I have said, that the beauty of poetic expression lies in its openness to interpretation. On a similar way, this beauty was indeed used by both Mahatma Gandhi in his Swaraj Wala model and Muslim League in their champions of Muslim Wala concept. Also, it has an influence on political thought. Poets often delve into political matters, challenging oppressive regimes and questioning authority. Their works can ignite movements and influence political thoughts in profound ways. For instance, in the 18th century, Lord Byron's poem addressed issues of freedom, social justice, democracy, inspiring revolutionary sentiments across Europe. Similarly, during India's struggle for independence, Rabindranath Tagore poetry played a significant role in galvanizing the masses and voicing their collective yearning for freedom. Through their art, poets become torch-bearers for social change and catalysts for the process. Very nice. Now, throwing light on the neglected legislators wala part. Despite their immense contribution, poets often go unnoticed and unrewarded in comparison to other influential figures in society. Their works may not be financially lucrative, and their voice might be marginalized by mainstream media. However, the impact of their words, their thoughts, and their dreams can outlast the most robust laws and policies. In the concluding phase, as quoted by Percy Bysshe Shelley's assertion that poets are the unacknowledged legislators of the world, remains as pertinent today as it did during his time. Poets wield the power of words to influence, challenge, and inspire society. Through their verses, they capture the human experience, stimulate imagination, and advocate for change. Poets serve as the conscience of humanity, guiding us towards compassion, empathy, and progress.
As a society, we must recognize and celebrate the significant role poets play in shaping our collective destiny, for they are indeed the unacknowledged legislators who mold the world's very soul. Also, poets are wonderful teachers as well. Like so, one day I was scrolling YouTube, shorts देख रहा था Instagram की तरह, and I saw one Khan sir वाला video. Therein, he was explaining the Indian map, and he did it with the help of our national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravid, Utkal, Banga. So that's the creativity of our poets. So they are indeed the unacknowledged legacy of the world. Thank you. Yes, ये किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है जी सर. और ये एक बहुत बड़ा स्टैंजा है. हमने उसका कुछ सेलेक्टिव पार्ट ही अपने नेशनल एंथम में लिया है ना. दिस पूरा एक बार आप पढ़ना. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पूरा पोएट्री लिखा है. रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही पहला मिला था दिस नोबेल प्राइज मिला था. वो किस पोएम के लिए मिला था? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तरुण, आप बहुत अच्छा बोलते हो. चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी भी बहुत अच्छा है. तरुण की एक और अच्छी बात है, हर एस्पेक्ट को कवर किया है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, वो नेग्लेक्टेड था. टुवर्ड्स द एंड मैं यही सोच रहा था शायद तरुण भी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेगा नेग्लेक्टेड पार्ट को, बट इसने नेग्लेक्टेड पार्ट भी बहुत अच्छे से बताया कि ये कैसे अनरिवॉर्डेड है. यहाँ पे फाइनेंशियल इतना हेल्प नहीं मिल पाता है. यहाँ पे कई बार साइलेंस कर दिया जाता है, मजल हो जाती है उनकी वॉइस, या फिर पेन और सॉर्ड के बीच में फाइट हो जाता है. ये बहुत अच्छा पार्ट है. तो हमेशा ना हर एस्पेक्ट को कवर करना है, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए. और ये जो आपने चैलेंजेस बताए कि किस तरीके से हमें इमेजिनेशन, क्रिएट, पावर ऑफ वर्ड्स है, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो तरुण, आप बहुत अच्छा बोलते हो. दिस इज रियली गुड. रफी, आपका भी बहुत अच्छा था. देखो, हर एरिया का ना एक टोन आ जाता है. जैसे आप कश्मीर से हो तो उसमें थोड़ा कश्मीरी वाली बात नजर आएगी, और वो आनी भी चाहिए, है ना. जैसे शैलजा ने हैदराबाद से बोला तो वो हैदराबाद तेलंगाना दिख रहा था, उसमें तेलंगाना दिख रहा था. इट इज परफेक्टली ओके. हरजिंदर ने सकूल बोला तो वो भी परफेक्टली ओके. स्पेसिमेन बोला था, दैट इज परफेक्टली ओके. तो हमें ना अपनी जो बात है उसको रखना चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्योंकि इंडिया इतना ब्यूटीफुल और डाइवर्स कंट्री है कि हर जगह का एक डायलेक्ट होता है, हर जगह का एक बोलने का तरीका होता है. तो वो इम्बाइब होना चाहिए, वो दिखना चाहिए, और उसको एम्ब्रेस करना चाहिए. देयर इज nothing wrong in that, nothing wrong in that. Yes, okay, yes, unity in diversity है, unity in diversity है. तो ये हमें रखना है ना. Hi Riya. Hello, hopefully I'm audible. Yes, Good you are afternoon, audible. sir. अब The Riya topic Bangalore for से है today, ना. Yes. yeah, so the Yes. topic for today, which I have Yes. taken, is a ship in Yes. harbor is safe, but that is not Yes. what ship is for. Yes. The above written statement very well signifies the importance of one's actual potential, which can only be realized after leaving the comfort zone bubble in which we all by default are trapped in. A ship in harbor is safe because it does not have to go through any tidal or oceanic activity which can lead to its downfall in the near future. The same observation applies for human beings, which states that everything achieved in one's safe zone does not account for real struggle or prominence. However, a step beyond our comfortness is what actually matters and is accountable or applaudable. As the statement further states, but that is not what ship is for. Because the structure of the ship, the streamlined body, is meant to sail through huge water bodies and oceans so that the ultimate goal can be achieved. Same goes with the human body and mind. Our creation is so beautiful that we can achieve anything and everything in life with little or utmost efforts. If we would not have moved out of our comfort zone, I suppose we would not have developed such a huge and beautiful legacy of civilizations all around the world. To my pleasure, I would not have seen such bright minds speaking with this confidence in front of me if they would not have said no to all odds and wouldn't have tried to achieve this excellence or abundance of knowledge. Everything in this world requires an attempt of hard work, which can only be achieved if the illusion of comfort zone compresses. Same as the nature of ship, which is to cross the violent waters, we as human species have to develop ourselves, leaving all our biases and inner prejudices aside. Because the structure of our body and mind can achieve something way beyond our own comfort zone and luxurious analysis. I'd like to end this speech with something which states that some things in life have to be experienced for the first time. Thank you. क्या बात है. दिस इज सो गुड. ये जो कंक्लूडिंग पॉइंट था, और जिस तरीके से ये बताया कि
शिप से हम एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, शिप समुद्र में जा रहा है, ऑल टाइप ऑफ एडवर्सिटीज है, बट एक्सप्लोर हो रहा है। तो सिमिलरली जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये भी एक साइंटिफिक मिरेकल है। हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत केपेबल है। जो भी लॉक्स है ना, वो लगे हुए हैं मेंटल बैरियर्स। अगर हम मेंटल बैरियर्स को हटा दें, अपनी बॉडी को चैलेंज करें, तो ह्यूमन बॉडी इज केपेबल टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। यस, रिया की वॉइस बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग वॉइस है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, और अगेन जो चॉइस ऑफ वर्ड्स एटसेट्रा है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। तो दिस इज वेरी गुड रिया, ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। ऑल राइट, यस, वेरी नाइस रिया। Thank you, sir. यस। हाय सुप्रिया। Hello, sir. हेलो, जय Hello, महाराष्ट्र। sir. यस Yes, sir. Yes. Jai India. Yes. Sir, Yes, I'm Supriya. audible. Yes, you are audible. So, yes, my topic is a ship in harbor is safe, but that is not what ship is for. Yes. So, yes, actually, sir, as a human, we are evaluating species. Human is an evaluating thing. Evaluation never happen just like that, and Yes. we have to suffer, and then adaptation happen. Yes. If we kept ourselves in comfort zone, might be we are not same as we are now, right? Then might be we are extinct like other neutral species. Here is the matter of survival of fittest. Yes. We have to come up out of our comfort zone. That this statement that the ship is not for only keep it in harbor safely. Yes. In our Upanishads, there are two contradictory things that Vivek Chudamani is the 20th, in Vivek Chudamani, there is a 20th verse, says that Brahma Satyam, Jagat Mithya. And in this Vivek Chudamani, Sri Shankaracharya explains the nature of universe. He says only Brahma, that is creator of God, is Satya or truth. But we have Mundaka Upanishad, in which verse said, I am a creator, and Bhagavad Gita also said that the world is made by me, balanced by me, and destroyed by me many times. Then how it will be possible? As Vivek Chudamani says that Jagat Mithya, that is world is fake. There is another one philosophy related to it, that there is a no one world, like two worlds, the two world theory, that one we created in our mind and one is the real. There's so many possibilities, impossibilities, and creations. Firstly, we create in our mind, and then become in world by competent and skillful people. And I want to tell one story that there are two examples. One is Howard Hughes. He is the richest person in the world, a known playboy in Hollywood, having a lot of money, fame, and a good physique. He is having good physique. He is having, but he is having obsession from germs. That is, he is having a germophobia. He always in fear of germ, always become isolated from people. And last of his life, the last some years of his life, he mostly stayed in hotels due to fear of germs. And I have another story from the Vardha, the female. Sorry. On the other hand, there is a lady named Sindhutai Savkar. She literally used to live in graveyard for food and security because her family members threw her out from the house. But she fought. She came out of her comfort zone and became a mother of all one day. So Howard had everything, that money, fame, body, but he cannot control his mind. That he cannot come out from his comfort zone. But in the other hand, there is Sindhudai Sabkar. She had nothing, but she, like, we pray her. Yes. She's an awesome lady, sorry, sir. Yes. Actually, Yes. Continue. Yes. So just like that, I'm not saying that there should be a middle path or there are some different aim, but I I'm a pro changes. Like I think that there should be a change if we have to succeed. Yes, and in short,
I want to quote Mahatma Gandhi here that if we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. A man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. Yes. Sorry, sir. Actually, Supriya is very hardworking, very hardworking. Hospital work, then this study, etc. You are very hardworking. और आपने जो बोला है ये बहुत नेचुरल वे में बोला है, कॉन्वर्जेशन स्टाइल में बोला है. इट इज अच्छा रियली मैंने गुड. लिखा नहीं था. हाँ, आपका इम्प्रॉम्प्टू नजर आ रहा है बहुत, जैसे नॉर्मल कॉन्वर्जेशन करते हैं ना, पॉडकास्ट करते हैं, उसमें हम जैसे बातें कर रहे हैं, लाइक दैट. दिस इज एक्चुअली रियली सर, गुड. हाँ मैंने सोचा था कि मैं जैसे अगर मुझे इंटरव्यू में पूछा गया होता तो मैं कैसे आंसर करूंगी, ये सोच के मैंने बिना लिखे ये सिर्फ दिमाग में मैंने ये सिंधुताई और हार्वर्ड यूज का पॉइंट लिख के रखा था. और उस पे यस आपने अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है. पॉइंट्स भी आपके बहुत अच्छे हैं. अब इसको हमें ऐसे में भी लिखना है ना. केवल अभी जॉब कंप्लीट नहीं है, अभी जो बाकी है वो अभी ऐसे भी है ना. ऐसे. यस सर, थैंक्स सर. है ना. यस, वेरी गुड. हाँ, अभी वो भी करते हैं, है ना. हाय श्रुति. Hello, sir. हेलो. Am I audible? Yes, Am I you are audible, audible. sir? Yes, you are audible, Shruti. My topic is the ship is harbor. It's my topic of ship. Yes. Continue. Yes. Live as if you were die tomorrow, and learn as if you were to live forever. Yes. It's the famous quote by Mahatma Gandhi ji. Yes. Our life is not for the comfort zone until unless we taste the defeat of dreams, blood out of pains, and tarnishment of ourselves. There is nothing like it. Yes, life is full of arguments. A ship dwells deep in the ocean. We ourselves have something more to find out. As high tides strike with the ship and ship starts shaking, same as when the high tide of problems come in our life, we have to fight with it. Though we are shaken, but it's not mean we are get defeated. Once the fear of the lost to die it gets out, the greatest courage we gain to swim is coming. There is a very famous dialogue that is the problem is not the problem is your attitude about the problem. Do you understand? As we deep dive, not all the treasure we find, like silver and gold, is the same. In the same life in the human, there are so many persons we strive with, and the situation we are confronted will have to give good results. Instead, sometimes we try to depress it and tarnish it out. Life is about to explore the new things, to show courage, to always flow, to always be ready. Don't feel comfort zone is the pleasure of your mind, your body, because sword in the scrap is rusted, and there is a no value of rusted sword. Make choices, think in between the line, talk, go, roam, explore. Choices the things, challenge the rules, make and destroy the world. Look far behind, in the deep ocean, swim over the ocean, find best out of best, choose the worst, sail through storm, embrace the tides, meet the hero, new islands, stay for the exploration, show courage in challenge to your mind, to your peace. Sail like a sailor, sail to find the treasure, find the treasure in yourself, find it in equality, harsh conditions, punishment, show the courage to learn out of rage, tides, storms, have patience and stay calm after defeat. Arise after storm, sail after tides, look beyond the trenches. Because if Meera thought there is, I'm get married and I have husband, I don't have to leave my house. There is no Meera. If Kalpana Chawla thinks space is far away, there is no Kalpana Chawla. If Lakshmi Bai thought battle is a game of men, there is no Kalpana Chawla. So learn, dive, sail, because this is the ship and this is the actual life. लड़ना है फितरत तेरी तो लहरों से क्यों डरता है, लड़ना है फितरत तेरी तो लहरों से क्यों डरता है, जब तूफान हुआ तुझे डर ना हो तो लोगों से क्यों डरता है, इस नाव को डाल दे लहरों में और बह जाने दे सागर पार, फिर देख आने वाले समय में होगी तेरी जय जयकार. दिस इज द लाइफ एंड दिस इज द आर. थैंक क्या यू बात सर. है. वेरी गुड, वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. श्रुति, आप बहुत कंपैशनेट हो, बहुत अच्छे से आपने सारी चीजों को बहुत एम्फेसिस दे के बोलती हो. दिस इज रियली गुड. हमें ये जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से बताए और हम टॉपिक में रहे.
कि करेजियस होना जरूरी है. करेज का मतलब फियर नहीं होता है. करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज मीन्स द एबिलिटी टू ओवरकम दैट फियर. डर सबको लगता है, बहादुर वो होता है जो डर को ओवरकम करता है ना. तूफानों में नाव मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, अब धार क्या मझधार क्या. तो एक बार डिसाइड कर लिया है यूपीएससी करना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना है, तो अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है, साइडवेज नहीं देखना है, केवल लक्ष्य पे ध्यान होना चाहिए. चाहे जो भी बीच में आए, जो चुनौतियां आए, जो प्रॉब्लम्स आए, उसको हम ओवरकम करेंगे. और ओवरकम भी हंसते मुस्कुराते करेंगे, प्रेशर लेके नहीं करेंगे, है ना. प्रेशर लेके नहीं करेंगे. वी विल टेक इट लाइक अ गेम. फाइटिंग स्पिरिट होना बहुत जरूरी है. फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट. ओके, फाइटिंग स्पिरिट लेंगे, जोश के साथ उसको टकराएंगे और उसको ओवरकम करेंगे. ये एटीट्यूड से हमें आगे बढ़ना है. सो शिप सेफ है हार्बर पे. आज संडे है, सब यहाँ पे एंजॉय कर सकते थे, रेस्ट कर सकते थे, स्लीप कर सकते थे. बट लास्ट 3 आवर्स से हम सब यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं. वाई? बिकॉज कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, है ना. We sailed and sailed without any fail, but now it's cloudy in the sky. So let us go back and journal how we gave a try. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस. यस, यस, वेरी गुड. तो आप सब बहुत अच्छा बोला अभी. इन हार्बर्स एम्ब्रेस, माधव ने बोला, अ शिप में रेस्ट amid gentle waves, it feels its best, shielded from storm, safe and secure, but that's not what a ship is meant for. So you all are so young. अभी लाइफ तो स्टार्ट हुआ है, अभी चैलेंज करो, फेस करो, बी करेजियस, है ना. चैलेंज, एक्सप्लोर करो, बी मोर, एक्सप्लोर, बी मोर, और सीखो. हर एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो. अगर हम लेसन्स लर्न कर रहे हैं तो हर एक्सपीरियंस इज अ गुड एक्सपीरियंस. मार्क माय वर्ड, एवरी एक्सपीरियंस इज अ गुड एक्सपीरियंस अगर आप वहां से लेसन्स लर्न कर रहे हो. सो लर्न द लेसन्स एंड कॉन्फिडेंटली अपनी शिप को आगे बढ़ाना है. तो सबका ये फेवरेट टॉपिक भी था, शिप. सबने बहुत अच्छे से बोला. ओके, तो अभी अब इसी को कंटिन्यू करना है हमें. अब नेक्स्ट क्लास इससे भी और बेहतर होगी, नेक्स्ट क्लास इससे भी और बेहतर होगी. तो देखो कितना अमेजिंग तरीका हमने इनोवेट किया है, बिकॉज अपने पास रिसोर्सेज और टाइम सबकी कमी ही रहती है. सो हमारा ये ऐसे भी हो गया और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा डिस्कशन भी हो गया. नो, यस. सो अब इस क्लास को एंड करते हैं. अब हमें क्या करना है, आपके पास 2-3 दिन का टाइम है. इस पे एक अच्छा सा ऐसे लिखना है, जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है ऐसे के रूल्स को फॉलो करते हुए इस पे प्रिपेयर वन ऐसे, और उसको सबमिट भी करना है ना. यस. सो एवरी वन ऑफ यू राइट वन ऐसे एंड सबमिट इट टू द वेबसाइट. ऑलराइट. यस, यस, वो विमेन एम्पावरमेंट वाला ऐसे भी हो गया. यस, ऐसे हो गया, है ना. तो सुमेधा सारे ऐसे लिखना है और उसको सबमिट भी करना है. यस, नो रेजिस्टेंस. यस, यस, ऑलराइट. चलो, पीडीएफ भी करना है. मैंने वो प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट बना दिया है, वो भी मैं शेयर करता हूँ अभी, प्लेलिस्ट में शेयर करता हूँ. ठीक है, चलो. रेज हैंड किया है, यू वांट टू टॉक, व्हाट हैपेंड? यस, ऑलराइट. चलो, सो लेट अस एंड दिस क्लास नाउ. लेट अस एंड दिस क्लास नाउ. 3 hour 10 minutes हो गए. लेट अस एंड दिस क्लास नाउ. एंजॉय द वीकेंड. संडे एंजॉय करिए. आज रात को क्लास नहीं होगा. न्यूज़पेपर आई विल ट्राई. न्यूज़पेपर थोड़ा लेट हो रहा है, मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी करने का. विल डू समथिंग, विल डू समथिंग. ओके, चलो. सो लेट अस एंड दिस क्लास नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, टेक केयर. और सबको बताओ सृजन इंडिया 1 के बारे में. वी हैव टू रीच टू मोर एंड मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, टेल योर फ्रेंड्स, टेल एवरीवन. इतना ऑसम तरीके से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी है, सब चीजें कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे. ओके, और कम्युनिटी हमारी कितनी ऑसम कम्युनिटी है. दिस इज अ ग्रेट कम्युनिटी, ग्रेट कम्युनिटी. ऑलराइट, चलो. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.